सो आज हमारे साथ दो बहुत ही अच्छे दोस्त और बड़े ख़ास गेस्ट हैं। सो आज हम करने क्या लगे हैं, आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डिस्कस करने की, द सिचुएशन ऑफ लॉयर्स एंड लॉ इन पाकिस्तान। एक बहुत ही अहम टॉपिक, आई थिंक हर हाउस होल्ड के अंदर डिस्कस होता होगा, एंड बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक, जिसमें होता है ना डॉक्टर्स को उनको एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए बिफोर दे कैन ऑपरेट। सो आज के भी जो हमारे साथ दो लोग हैं, they are also as expert as it gets in our field and in our age group, in our cohort. So I welcome you both, Mustafa and Salman, to attorneys at law, as I've been told. Acha, Mustafa and Salman, before we get into some very burning questions about law and lawyers in Pakistan, आप लोग अपना थोड़ा सा तारुफ कराएं, how you two got into law and what are you doing right now. Maybe Salman, if you want to go ahead first. आपने हमें compared to how much we were expecting कुछ ज़्यादा इज़्ज़त दे दी है, so we're grateful for that. And maybe I can start with just telling everybody how we in fact sort of know each other, is how I think the both of us ended up in the legal profession. After school हम सारे लम्स में इकट्ठे थे, and Mustafa and I were part of the BLLB program. The great thing about the program there was कि BLLB में आप पहले 2 साल आपको मौका दिया जाता है to sort of study different courses, whether it's the liberal arts, whether you decide to take science courses. It's really up to you. You can mold your experience accordingly. और उस वक्त में आपको एहसास होता है कि I mean, conventionally one thinks of lawyering as something very sort of procedural, कि अच्छा बस हमने जाके कोई documents file करने हैं, अच्छा जी केस करना है तो इस तरीके से उस तरीके से. But if we think about it, the law sort of undergirds everything around us. And law क्या चीज़ है? Is it just आपको पार्लियामेंट एक चीज़ बताती है कि you encode this is the way that rights and obligations are going to operate from now onwards. Well, that's one form of law, but there's also a softer form of law that operates around us, right? We have rules, regulations, whether we're playing a football match, whether we are in a workplace कि अच्छा जी आप किक स्टार्ट में काम कर रहे हैं तो इतने बजे से इतने बजे तक आपने शोर नहीं मचाना, ये भी एक तरह का रूल है, लॉ है. So what are these ties that sort of operate to constrain the way that we behave and we act? और ये एक तरह का एटलीस्ट मेरे नज़दीक एक एहसास था कि दिस इज़ अ फैसेट ऑफ एवरीडे लिविंग that fascinates me. What makes things operate the way that they do, whether they're and I guess the more formal law that I practice as part of as a professional is entailed more with, again, laws imposed by the state. But more broadly, it's an interesting question to dwell on, and in university, that's what drew me in that direction. So फिर दूसरे साल तक मेरे ज़हन में ज़रा टेंटेटिव था कि वकील बनना है या नहीं बनना, क्योंकि आप देखते हैं काले कोट वाले वकील और आप कहते हैं अच्छा इनको हमने कहाँ देखा हुआ है, सड़कों पे देखा हुआ है, PIC के बाहर शीशे तोड़ते हुए और अदालतों में नारे डालते हुए. और जब मैं आंटी के घर जाता हूँ तो आंटी कहती हैं बेटा वो मेरा 4 साल से केस फंसा हुआ है. तो these are the context in which you know lawyers. The context that you don't really hear about lawyers in is how we operate in the background, how we operate to facilitate transactions, how we facilitate to mitigate conflict, to mitigate risks, and to enable people to play according to the rules that we decide as a community and a society, so that it never gets to the stage where आपकी खाला का केस 4 साल से फंसा हुआ है और अब अगले 10 साल फंसा रहेगा, तो जिंदगी भर ताने पड़ेंगे. बिल्कुल. तो that's sort of what drove my decision to enter the law, is just because it came out of a sense of intellectual curiosity, and that also in a sense continues to drive it. Maybe I think Mustafa has a less romantic view of the law and lawyers, so maybe we can hear a bit from him. Mustafa, do you I don't think you echo my sentiments. First of all, thank you, Makeet, for having us today. It's a pleasure. So just as Salman ne kaha, my journey to the law is a bit different. I don't see the law as he does. Okay. I think I focus more on the problems with the legal profession in Pakistan, and that hinders my appreciation for the law to the extent that he does. But we're doing it. It's a career. My journey to becoming a lawyer started in school, and Mukeet and I were in the same school together with parliamentary debates.
So when you're debating, it's a weekly thing. You're coming up with arguments. You're looking at the law. यहाँ पे इंटरजेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, मॉडेस्ट, ये पाकिस्तान की डिबेट्स टीम का हिस्सा थे और ये काफी कुछ जीत जूती है, तो बहुत बहुत अच्छी डिबेटिंग करते हैं. गलतियां सारों से होती हैं. लेकिन yes, so I was in the school debate team, then I was in the national debate team for 1 year. So उधर से like argumentation coming up, looking at laws, constitution होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो basic हमारे topics होते थे कि one child policy होनी चाहिए कि नहीं, written constitution होनी चाहिए कि नहीं. So that's where my first interaction with the law began. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैथ तो आती नहीं है और साइंस भी नहीं आती, तो चलें फिर यही कर लेते हैं. तो आई डिसाइडेड टू बिकम अ लॉयर. उसके लिए मैंने लम्स अप्लाई किया. सलमान और मैं सेम बैच में थे स्कूल में. मेरा एडमिशन नहीं हुआ. फिर मैं चला गया पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि वालिद साहब ने कहा कि बाहर तो जाना नहीं है और लॉ करना है, तो यही ऑप्शन है. फिर UCL की डिग्री करनी नहीं है, वो इंटरनेशनल डिग्री, वो लोकल डिग्री. फिर मैं साल पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा. I applied again to LUMS, and then I thankfully got in the second year. Okay. And then we did the LUMS has a 5-year law program. Salman and I did that program. Yeah. And then we worked for a bit, and then we did our LLMs, and then we started practice. और आप लोगों ने अपने LLMs कहाँ से किया था? I think Salman, you didn't mention. So I practiced for a year in Pakistan, and then I went to the United States. I went to NYU. New York University, and I did my LLM from there. Okay. वैसे जस्ट एज ए डाइग्रेशन, मैं मुस्तफ़ा को अपना एक तरह का शागिर्द समझता हूँ, क्योंकि वो एक एक कदम पीछे मेरे स्टेप्स मिरर करता रहा है. आई जस्ट ऑफ कोर्स, बट लाइक सो मुस्तफ़ा वाज अ ईयर बिहाइंड मी. तो जब मैंने 2016 में अपनी डिग्री ख़त्म की, तो 1 साल के लिए आई वर्क विद द लॉ फर्म हेयर विद व्हिच आई एम स्टिल एम्प्लॉयड. तो उस 1 साल के बाद आई ऑल्सो वेंट टू द स्टेट्स टू डू माई LLM. आई वाज एट हार्वर्ड लॉ स्कूल. ये आपने झिझक के क्यों बोला है? देखिए वो बात अब इन द बैकड्रॉप एक ये डिस्कशन चली है कि कितना नेम ड्रॉपिंग करनी चाहिए, एंड विल टॉक अबाउट दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लीगल प्रोफेशन एज वेल. कि इस बात को अनफॉर्चुनेटली आई थिंक, वेल मे बी इट्स नॉट एन अनफॉर्चुनेट थिंग, बट दिस इज अ फैसेट ऑफ आई थिंक business development, whether it's in the law or whether it's in any other profession. Okay, your education and where you go to get educated makes a big difference. To an extent, because ultimately if you don't perform and if you don't know what you're doing, it doesn't matter whether you go to Harvard, whether you go to Columbia, whether you go to LUMS, whether you go to LSC. people आप किसी के पास काम लेकर आएं और वो आपका 4 साल में केस ना रिजॉल्व कर सके, तो it doesn't matter whether they went to Harvard or whether they went to LUMS or whether they went anywhere else. So, but ultimately, I mean, I think a lot of, and maybe Mustafa, we can hear a bit from him about this as well. But it's good exposure to go abroad. Absolutely. To get an education, and particularly in our line of work, where एक हद तक अब आप पाकिस्तान में जो कानून प्रैक्टिस करते हैं, that's Pakistani law. That's different from going to Europe, going to the United States. In fact, the United States, in a sense, is not one system. It's 51 systems, because there are 50 states and there's the federal system. तो वो it's not necessary कि आप कोई hard skills वहाँ सीखने जा रहे होते हैं, but it's about exposure. It's about learning how to think. It's about learning how to interact with other people. लोगों के साथ उठना बैठना कैसे ग्रूमिंग है आपकी. तो in that sense it's a good experience, and I think the both of us when we so we're friends, by the way, you know. But like they are not into individual people like from separate walks of walks of life, but they are working together as well. We work together as well. We spend much more time together than we should. हमारा मतलब 12 hours on a daily basis, approximately, on at least a daily basis. Saturday Sunday separate. और हमने आपको इस कमरे में भी साथ बिठा दिया. इस कमरे में भी साथ बिठा लिया. I don't know, we should be thankful or apologize for that, but यार ये जो आप लोग academic success है, at least इसके ऊपर हम थोड़ा बाद में, because जितने भी young lawyers हैं, of course they would want to know कि यार what makes a good academic profile to get there, and of course we know कि academia में successful होना and actual profession होना two very separate things, but still, as you said, to have that pedigree, to have that portfolio is super important to be a successful lawyer for learning and otherwise as well. अच्छा, ये सवाल मैंने सोचा नहीं हुआ था, लेकिन सलमान जब आप अपना इंट्रो कर रहे थे तो मेरे ख्याल से it was just an intriguing thought in my mind कि आपने कहा कि यार you know हर जगह अपना एक रूल होता है, किक स्टार्ट का एक अपना रूल है, उसको फिर आप टेंजिबल करते हो, उसको ऑपरेशनलाइज करते हो into something and then it applies, then you implement it. आप ये ज़रा थोड़ा बता सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर एज अ स्टेट यहाँ पे लॉ बनता कैसे है? लाइक
how does the thought come, and from where does that thought drives into a कानून, and then people get punished for it or something. Well, that's a मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। मतलब जितना भी पता है, I mean, it's not well, your I field think exactly. if this is but the yeah. one question that a lawyer should be able to answer, I mean, I think that this would be it. But acha, what's interesting is that I was watching, I think, I forget if it was a movie or where it was, but in civics class abroad, I think American movie thi, so it must be the US system. So in civics class you learn this, you learn what a bill is. वो एक किरदार होता है जिसका चेहरा होता है और फिर डांस करता हुआ बताता है कि मैं कानून कैसे बनता हूँ. So I mean, just briefly, ordinarily the prerogative to legislate usually lies with the government of the day, क्योंकि government पाकिस्तान में हमारे parliamentary निज़ाम में जो जिसकी national assembly में अक्सरियत होती है वो हुकूमत बनाती है. And because they have a majority, at least in the National Assembly, not necessarily in the Senate, because we're a bicameral legislature. And I'll explain that in a bit, कि वो उसका क्या exactly structure होता है. But हुकूमत का prerogative होता है और उसका agenda होता है कि हमने जो कानून बनाने हैं वो क्या हैं. And it's they usually have most bills that will pass will be government bills. Although some bills or some agenda items that are placed before the assembly may be private bills, either sponsored by a minority M&A, etc. So वही बात है, I was just talking about bicameral legislature. So जो हमारी legislative body main है वो है मजलिस शूरा जिसे हम कहते हैं, और parliament. So parliament legislates, कानून parliament बनाती है. और parliament के दो houses होते हैं. एक house जो जैसे upper house कहते हैं वो senate होता है, और lower house national assembly. जो popularly elected है house, that is the national assembly. और वो किस तरीके से सिलेक्ट होती है, मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग टू नो बिकॉज दिस इज समथिंग दैट affects you as an individual on a day-to-day basis. कि अगर आप लोगों ने जो नेशनल इलेक्शन होती है उसमें जब आप वोट अपना डालते हैं तो आपका हल्का होता है जी NA 133 NA 134, वो कंस्टिट्यूंसी एक बनी होती है और हर कंस्टिट्यूंसी की एक नेशनल असेंबली में सीट होती है. तो वो जो MNA या MP होता है उसकी इस तरह से बड़ी हैसियत है कि यू आर इलेक्टिंग द गवर्नमेंट दैट अल्टीमेटली डिटर्मिन्स और हैज़ द प्रोरोगेटिव टू डिटर्मिन कि कौन से कानून इवेंचुअली लेजिस्लेट होंगे. तो जो नेशनल असेंबली है उसमें इट्स पॉपुलरली इलेक्टेड. जो सेनेट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है, उसमें उसकी कंस्टिट्यूंसीज होती हैं और उनकी टर्म भी ज़रा मुख्तलिफ होती है. खैर ये दो हाउसेज होते हैं और इन दोनों ने जो होता है मिल के कानून बनाने होते हैं. दे हैव टू अग्री टू पास अ लॉ in order for it to become ordinarily. I mean, there are some exceptions where there will be disagreement between the two houses, but ordinarily, the simplest law, you would think, it can originate in either house. One of the senators or one of the members of National Assembly, usually someone who knows or has some form of guarantee that mera bill will be passed by a majority of the members of this house and the other house. Therefore, why the government usually has the prerogative to legislate. क्योंकि उनकी एक तरह की if you have a majority in government or at least आपकी coalition government बनी हो तो आपको कुछ हद तक एतबार होता है कि हमारा बिल पास हो जाएगा. And we'll talk about how that is also controversial, क्योंकि आप लोग ये लफ्ज़ बहुत सुनते होंगे आजकल ordinances का कि भाई आजकल ये ordinance है, आप कहते हो ordinance क्या है, ordinance क्या है. वो ordinance factory, वो वहाँ में ordinance factory नहीं है, वही चीज़ है. ये हमारे रोज बम दबाके का काम हो रहा है. But I'll explain why that's the case in a bit. But so when a bill is tabled to National Assembly, let's say वो पढ़ती है, उसमें ostensibly debate होनी चाहिए कि अच्छा भाई किसी ने बिल ला के टेबल किया और उस पर बहस मुबाहिसा हुआ और let's say PMLN का बिल है तो PPP वाले उठ के कहते हैं देखें इसमें आपने ना रोटी का जिक्र है, ना कपड़े का जिक्र है, ना मकान का जिक्र है, तो आपने किया क्या. तो उन्होंने तो उसमें जवाब में MNA साहब कहेंगे कि देखें हम ब्रिज बना रहे हैं, उसमें हम ना रोटी दे सकते हैं, ना कपड़ा दे सकते हैं, ना मकान दे सकते हैं. तो खैर बहस मुबाहिसा होता है. आर्ग्यूबली दैट डिबेट प्रोसेस, अब मुस्तफ़ा डिबेट की बात कर रहा था, व्हाई इज डिबेट सो इम्पोर्टेंट टू आवर डेमोक्रेसी एंड टू लॉ मेकिंग, कि वो बहस मुबाहिसे के बाद एक आप नतीजे पे पहुंचते हैं कि यार मेरी कंस्टिट्यूंसी ये चाहती है, आपकी कंस्टिट्यूंसी ये चाहती है, लेट्स find the best way to common ground and to do something that benefits everybody with the resources that we have. और वो बहस मुबाहिसे के बाद वो बिल जो है उसके अल्फाज इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं और वो स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाते हैं उस बिल में कि ये हर किसी को
काबिल कबूल हो। नेशनल असेंबली इसे पास करती है, फिर वो कहते हैं ठीक है अब ये हम सेनेट को भेजते हैं, सेनेट उसे देखती है, उसमें भी यही एक बहस मुबाहिसा चलता है, वो चाहें तो उसको रिजेक्ट करके वापस भी भेज सकते हैं। बट द आइडिया इज़ इवेंचुअली कंसेंसस बिल्ड होकर जब दोनों हाउसेस उसको अप्रूव कर देते हैं तो फिर कहते हैं लो भाई अब हम कानून बनाने के लिए तैयार हैं, तो हमारी तरफ से डन है। फिर सिर्फ एक स्टेप रहता है कि सदर ने उसको साइन करना है, उसको अप्रूव करना होता है, और वो अप्रूव कर देता है तो वो एक कानून बन जाता है। एंड देन दैट इज एटलीस्ट द लेजिस्लेशन प्रोसेस फॉर एट द नेशनल लेवल। अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बिकॉज वेयर ए फेडरल सिस्टम कि हमारा एक वफाकी हुकूमत होती है, लेकिन सूबाई हुकूमतें भी होती हैं और सूबाई असम्बलीज भी होती हैं। हमारी सूबों में सिर्फ एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, तो वो एक ही पंजाब असेंबली एक, सिंध असेंबली एक, बलूचिस्तान इधर असेंबली। वो नहीं है, इधर सेनेट तो भी होता है, इसमें नहीं है। देयर इज ओनली द इक्विवेलेंट ऑफ द नेशनल असेंबली व्हिच इज द पंजाब असेंबली। तो उसमें वो प्रोसेस कुछ कट हो जाता है, उसमें बस एक हाउस है, उसने कानून पास करना है, वो के कर देते तो गवर्नर साइन कर देता है और आपका कानून बन जाता है, एंड देन इट इज द लॉ ऑफ द लैंड। और मुकीद until a new government comes and changes it. लेकिन फ्रॉम द साउंड ऑफ इट इट लुक्स लाइक बहुत ख्वारी वाला प्रोसेस, बहुत मतलब कि एक बंदा, लेट्स से एक बंदा है, एक नेशनल असेंबली का पार्लियामेंटेरियन है, अच्छा जी लॉ करना है, पहले उसने कोई दो मेजोरिटी को कन्विंस करना है, अगर उनको पता ही नहीं है क्या चीज़, उनको पता ना करना, फिर एट द डे सारे आ जाएं, पहली बात है अटेंडेंस हो जाए सबकी, फिर आके सारे उसको अप्रूव करें, फिर सेनेट में जाए, वहाँ पे कोर्ट करो बंदों को। इट्स आई मीन एक क्या कह सकते हैं आपका, उस सिस्टम को रिवर्स करने के अच्छे खासे सॉर्ट ऑफ ट्रिगर्स भी हैं इन प्लेस। बिल्कुल, so you're correct, and as Salman was highlighting, that is the ideal way of making a law, that you have this consultative process. जैसे अभी 2-3 steps हमने इसमें skip भी कर दिए हैं, इसमें committees होती हैं, so the National Assembly has committees. आपका बिल जो है वो directly on the floor नहीं जाता, it goes to a committee first. the committee में दोनों ऑपोजिशन के भी लोग होते हैं, ट्रेजरी बेंचेस के भी लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, और वो उसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज की जाती हैं, फिर वो अमेंडमेंट्स फ्लोर पे जाती हैं। पाकिस्तान में तो एक्चुअली बिल इधर लाइन बाय लाइन रीड किया जाता है, एंड इट्स कौन रीड पास करता है वो स्पीकर? सो वो लाइन बाय राइट रीड किया जाता है, इट्स पास क्लॉज बाय क्लॉज, सो हर वो क्लॉज को टेबल करते हैं, उसकी अमेंडमेंट्स। इज दैट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू गो अबाउट इट? वैसे it's not, but वो उसमें ये फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि if anyone has an objection, होता एक्चुअली इन रियल टर्म्स, क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड होता है कि ये लॉ, क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक लॉ लाई हुई है, सो ऑल गवर्नमेंट MNAs आर गोइंग टू वोट फॉर दैट लॉ, ऑफ कोर्स, बारिंग अ फ्यू प्रोविजंस, कभी वो हो सकता है, बट जनरली दे आर गोइंग टू वोट फॉर जैसे हम आजकल यूएस में देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है, राइट? जी। यूएस में इंटरेस्टिंगली इनफ, पाकिस्तान में तो ये दो मेन तरीके हैं आपके लॉ बनने के, इट्स आइदर मेड बाय द पार्लियामेंट और द प्रोविंशियल पार्लियामेंट, द फेडरल पार्लियामेंट, और थ्रू एन ऑर्डिनेंस, जैसे सलमान ने बताया। यूएस में एंड सम अदर कंट्रीज इज अनदर थर्ड वे दैट लॉज आर मेड, दैट्स थ्रू द पब्लिक। सो अमेरिका में फॉर एग्जांपल अल्टीमेटली तो एक पार्लियामेंट ही उसको पास करता है, बट इन द यूएस फॉर एग्जांपल दे हैव प्रोपोजिशंस। सो कैलिफोर्निया में फॉर एग्जांपल जब ये मैरिजुआना लीगलाइज हुई है ऑन अ स्टेट लेवल, पार्लियामेंट ऑब्वियसली द नेशनल द स्टेट जाना उधर से ही है, पास तो वही करती है, बट पहले इट्स पुट टू अ वोट, एक जो उनका इलेक्शन हो रहा होता है कि जी हम ये प्रोपोजिशन है, ये प्रोपोजिशन कहती है हम ये करना चाहते हैं, सो द पीपल वोट फॉर इट। उसके फैसले में इफ द पीपल से कि ओके वी वांट टू लीगलाइज मैरिजुआना, फिर उस पे लेजिस्लेचर जो है वो और पाकिस्तान में तो कहीं प्रैक्टिस नहीं होती है चीज। नहीं, पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता, कोई सिस्टम्स ही नहीं है करने। नहीं, पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में शायद वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतनी एक अल्ट्रा मेजॉरिटेरियन किस्म के मुल्क हैं कि अगर हमने ऐसे कर दिया तो बहुत जो लॉ शायद हम ना चाहें आने के वो लिए, आने लग जाएंगे, वो भी पब्लिक पास कर सकती है और वो भी ला सकती है। सो देयर हैज टू बी अ चेक ऑन द अदर साइड। अच्छा, तो आपने कहा ये हो गया जी, हमारी गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू एक लॉ या बिल एक बन गया, तो अब यहाँ पे हमारे लीगल सिस्टम का क्या काम है इसके अंदर, इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना? इज दैट द रोल ऑफ द entire legal system and they have no say in making a law? So would you want to take a crack at it or should I? I mean, we can both take a crack at it, given that this is what we do on a day-to-day basis. We should hear from both lawyers. सलमान, मुझे नहीं पता, ये कानून की बात आ गई है तो तुम्हें कर लेनी चाहिए। बड़ा हमारा पढ़ा लिखा दोस्त है ये यार, ये स्कूल के अंदर कहते थे कि ये चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है, ये चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है, इसको आप चाबी भी देने की जरूरत नहीं है, ये वैसे चल जाता है, ऐसे ही चलना पड़ेगा। But yeah, in short, you see, again, this is something that a lot of people learn in civics class, and I think it would be great if we had civics class in Pakistan at the primary, secondary level as well. कि बच्चों को देखें, आप ये तालीम लोगों को ना दें कि आपका जो
हुकूमत का निज़ाम है वो किस तरीके से चलता है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू पीपल टू पार्टिसिपेट इन व्हाट इज़ participatory democracy, डेमोक्रेसी, you हाँ. know, it needs to be participatory, that's the only way it can work. तो अगर लोगों को पता नहीं, अच्छा मतलब क्यों दिया आपने वोट इस एमएनए को, जी वादा वो दे रही वालदा दे रही थी थी, फलाना. हाँ, yeah. But sorry, Yeah, yeah, to yeah. your question, which is what the legal Yeah. sort of What the role of the, what is yeah. the role of the judiciary, what is the Yeah, role of yeah. lawyers in this sort of entire process. So obviously, I mean, through the representative process, अब एक कानून बन गया है. For better or for, I mean, and it needs to be implemented. For that, you have the executive, which is जो आपकी पूरी bureaucracy होती है, नीचे सारा अमला होता है. The police enforces criminal laws. जो आपकी civil disputes होती हैं, वो अदालतों में जाती हैं. जब dispute कोई बनती है कि आपने कोई contract बनाया और एक party ने breach कर दिया, और तो to seek redress, you go to the courts. That's where the judicial system, the judiciary and lawyers come in, which is to say that अब देखें कानून भी इंसान ने ही बनाया है, उसमें हमेशा कोई ना कोई नुक्स, कोई ना कोई एम्बिग्विटी, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी रह जाती है. एंड यू नीड समवन टू सिट डाउन एंड एक्चुअली डिसाइड कि अच्छा ये कानून है, अब इसके मुताबिक ये सही है कि ये सही है. एंड देन दैट्स व्हाट अ जज डज. Interpretation of the law, right? इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन. Application. कि एक सिविल डिस्प्यूट आया है, आपके और मेरे बीच में एक मुआहदा था कि मुकीत आप मुझे ये कॉपी भेजना और मैं आपको 100 रुपया दूंगा, और आपने मुझे कॉपी दी, मैंने देखा कॉपी में तो लिखाई हुई है, मैंने कहा मैं आपको 100 रुपया नहीं देता. अब तुम मुझे कहते हो कि भाई तुमने ये तो नहीं कहा था कि कॉपी में कुछ लिखा होना नहीं चाहिए. मैंने कहा नहीं, ये अंडरस्टूड था कि कॉपी में कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, मैं तुम्हें 100 रुपया क्यों देता अगर कॉपी में मुझे इस्तेमाल शुदा कॉपी चाहिए थी. So then this becomes an ambiguity. Now, if a law just says, you know, I mean, nobody would ever write a law that is that specific, that addresses that particular set of facts. There has to be a certain universality. So the law is usually somewhat general, and yeah. On a day-to-day basis, our encounters with the law are a lot more specific, and for that we need a legal system to adjudicate and determine legal systems. So that's the role of कि आप interpret करो law को, उसको apply करो, and then exactly. और फिर उसके लिए I'll just pass on to Mustafa, but उसके लिए role हम सारों का क्या बनता है कि एक तो जज बैठा था, आप कहते हो जज है तो फिर ये क्या वकला हजरात का क्या लेना देना है, ये क्यों कमाई करते हैं, ठीक है, ये 2 मिनट की एडवाइस थी, इसके 20,000 रुपए क्यों आप मांग रहे हैं. उस हमारा रोल ये होता है कि अब now a judge has 100 cases before him, and each of them will be dealing with an intricate point of law. The point of the adversarial legal system, जिसमें वकला का एक बड़ा ज़रूरी रोल होता है, वो ये है कि भाई एक साइड पे मैं हूँ, दूसरी साइड पे मुस्तफ़ा है. we're representing opposite sides of the party. We will obviously, in that combative process, we will put forward the best possible case with respect to our client, such के जज के सामने सारे ज़रूरी कवानीन और सारे ज़रूरी जो फैक्चुअल नुक्ते हैं वो आ जाएंगे, उनके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा. तो जज को बैठ के सारी अपनी रिसर्च नहीं खुद करनी पड़ती, जज को बैठ के सारा कुछ. You're making the job easier for the judge. Of course, through the adversarial process, you're delivering all the important points that will help the case be resolved. So that's sort of what we do as part That's of lovely. as That's a great explanation. lawyers. Yeah. So just adding on to that, excuse me. So जैसे yes, our role is to make the judge's job easier, and the reason why we have to do that, especially in a country like Pakistan, अगर आप सिविल कोर्ट आप हाई कोर्ट चले जाएं, किसी भी जज के कॉज लिस्ट देखें, कॉज लिस्ट होगा जो दिन के उनके केसेस लगे होंगे, सो यू विल सी कि उनके 70, 80, 90 केसेस एट टाइम्स सिविल कोर्ट में स्पेशली एक लगे होंगे. नाउ इफ द एक्सपेक्टेशन इज दैट द जज इज गोइंग टू रीड ईच फाइल, फिर वो दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, फिर वो केसेस देखेंगे, तो दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन. अभी भी इवन विद लॉयर्स हमें पता ही है कि क्या लाइक देयर आर अदर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड, बट दिस इज लाइक वन वे वेयर लॉयर्स, लाइक इफ यू आर अ गुड लॉयर एंड इफ यू वांट टू एक्चुअली be involved in improving the judicial system, that's why आपको तैयारी करके जानी चाहिए. That's why you should have the facts on your fingertips. Because otherwise यही होता है कि जज साहब भी obviously because he or she is not well versed with the file, because they have 50 files to deal with. If the lawyer is also not well versed with the file, तो उधर जो है वो ball drop हो जाता है. सही. Just like one real world example of, जैसे सलमान बात कर रहा था interpretation की, अभी we were dealing with this case regarding blasphemy. Okay. So हमारा एक सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का which basically prescribes not all but most of the crimes that can occur in the country, infractions जो होती हैं, उसमें एक सेक्शन है 295 से जो कहता है कि blasphemy करना illegal है और punishable है. उसके अंदर अब लिखा हुआ है कि anyone who uses words written or spoken or by visual representation does through words written or spoken says something that is considered blasphemous, तो punish हो सकते हैं. अब हमारे केस के अंदर there was this person who had forwarded a WhatsApp message that was considered blasphemous. तो अब कोर्ट ने obviously law में तो लिखा हुआ है words written or spoken or by visual representation.
अब एक मैसेज को फॉरवर्ड करना, इज दैट अ स्पोकन वर्ड, इज दैट अ रिटन वर्ड, हैव आई रिटन इट, हैव आई स्पोकन इट? अब ये एक इंटरप्रेटिव एक्सरसाइज बन जाती है जज की कि दे हैव टू, एंड द लॉयर्स असिस्टिंग द कोर्ट, दे हैव टू Wow. लुक एट देन कि Yeah. ये एक फॉरवर्डिंग ऑफ अ मैसेज, इफ इट्स ब्लास्फेमस, Does it विल इट fall फॉल into- अंडर दैट डेफिनेशन? और इसी तरह आपका लॉ प्रोग्रेस करता है. उस केस के अंदर उन्होंने कहा कि वो फॉल करता है और उन्होंने नहीं छोड़ा लोगों को. But yeah, That just raises an interesting point, which I wanted to bring onto the table as well, as the reason this interpretive exercise is important and how it connects to our earlier conversation about the legislative process. इसके देखें, ये हमने आप you said yourself, wow, that sounds complicated. Yeah. ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, Hmm. तो वो सही बात है, एक कानून बनने में बड़ी देर लगती है. And think about the lag between the rate at which our society evolves. मतलब look at technology, how Yeah. much it's changed over the course of even the past 4 or 5 years. And think about the laws that continue to govern these new social relationships, these new commercial relationships that are now predicated or built on new technology that wasn't in the mind of the legislator at the time At the time. that they were writing that law. So then what do? Amend. You have, well, amend, but even that's a slow process. So in the meantime, what you do is you have judges to sit down and say, well, Interpreting, yeah. what was the intention behind this law and how do we adapt it in order to cater to this new situation that may or may not have ever been in the minds of the original authors of this bill. And think about how this exercise, how important this exercise is for instance, constitutional systems, जहाँ जैसे अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1700s में, लेट 1700s में लिखी गई थी. तो 1700s के अल्फाज को अडेप्ट करके आज के मसले मसाइल को accommodate करना is it's a challenge, and there's a lot of exercise that goes into it. And look at the fact that it works in a way. I mean, I think it's debatable, like a lot of people say that it doesn't, but in order to even try to make it work, you need this entire apparatus in front of you, and that's also a part of what we do. Yeah. बड़ी वैसे और भी पैरेलल थॉट्स चल रही हैं. इट्स सो फैसिनेटिंग टू थिंक अबाउट. चाहेंगे पैरेलल? यार सर, एक मेरी पैरेलल थॉट ये चल रही है बिकॉज वी लिव इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एंड हमसे 20th सेंचुरी के टेक्स्ट रीइंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है. यहाँ पे तो लोग मतलब कि 1400 साल पुराना है रिलीजियस टेक्स्ट को पकड़ के उसको कॉन्टेक्चुअलाइज, हर कोई, इट इज़ सो डेमोक्रेटाइज्ड कि यार हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन करके उसको इम्प्लीमेंट करे, एक्ट करे. एंड दैट कैन बी you know, in short, can be a very troubling exercise at times, right? Which proved to be the case in a lot of situations. But this is a very sort of just a parallel that was drawing in my head. But अब जो मैं next question पे आपकी तरफ आना चाह रहा था, you were explaining कि यार एक adversarial comparative system of legal system जहाँ पे एक lawyer आता है, दूसरा lawyer आता है, to make the job of the judge easy and hopefully come to a conclusion for every case. But Pakistan is notoriously famous for very very long delays. I don't know. अब ये हमने तो In the legal system, ये lawyers को तो नहीं पता होगा किसी शायद. ने आपको प्राइम करके भेजा है हमारे खिलाफ. तो अब ये यार, हमारे खिलाफ साजिश अच्छा हो चले रही पहले है. तो आप ये बताएं कि हमें क्या corner किया जा ये रहा है. delays real हैं? और यार हमारे सिस्टम में अगर delays real हैं तो मुकीत, ये आपको कन्विक्शन से कह देना चाहिए. डिलेज तो है. चलिए delays तो हैं. देखें, वो तो जो एलिफेंट, ये तो एलिफेंट इन द रूम भी नहीं है ना, ये तो देखें भाई, ये फैक्ट है. ये तो सारे जानते हैं. तो यार ये मतलब कि आपके इतने लॉयर्स हैं आपके सर्कल में, हम भी हर बंदे को देखते हैं, काफ़ी लोग लॉयर्स बनना चाहते हैं, जजेस भी सिस्टम में आई गेस काफ़ी हैं. इतने ज़्यादा डिलेज क्यों हैं हमारे सिस्टम के अंदर? आई नो देयर इज़ नो वन सिंपल आंसर टू दिस, बट कैन यू गाइस रिफ्लेक्ट ऑन दैट? So I think there are a number of factors that would play into this. क्या कहते हैं, बिल्कुल delay, to the short answer to your question, बिल्कुल definitely delays हैं और unreasonable amounts of delay हैं depending on like the nature. Obviously it's again like anything, this is not a monolith. कई आपके cases consumer courts में, जैसे आपके पंजाब में especially जनरली वो केसेस तेज चलते हैं बिकॉज एक स्पेशल लॉ है. कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है? कंज्यूमर कोर्ट होता है जिसके अंदर सो इफ यू बॉट अ प्रोडक्ट और गॉटन अ सर्विस, you're unsatisfied with it, then you as a consumer can take the service provider or the manufacturer to court for कि आपकी ये malfunction करती है product, या आपकी fit for use नहीं है, या इसने मुझे कोई harm cause कर दिया है, मेरा फ़ोन फट गया है, बैटरी उसकी फट गई है, things of that nature. So वो एक कोर्ट है जिसमें जनरली चीज़ें तेज चलती हैं. इसी तरह अगर आप और केसेस देखेंगे, लैंड के केसेस देखेंगे, प्रॉपर्टी के केसेस, तो इधर 3 जनरेशन उस लैंड के लिए लड़ती रहेंगी और वो प्रॉपर्टी का केस नहीं सॉल्व होगा. वो उधर ही लटका रहेगा, इवेंचुअली कोई सेटलमेंट होगी, या आप किसी
कब्जे वाले को पकड़ेंगे और अपना लैंड उस तरह छुड़वाएंगे. That's what people do ultimately. So it's not a monolith, different kinds of, but broadly to your point, yes, there are a lot of delays. Uske multiple reasons hain, in my view, and obviously like you talk to each lawyer, everyone will हर give you कोई a different अपना एक reason, perspective अपना देखेगा। reason एक देंगे. मेरे हिसाब से अगर 3-4 आप मेन फैक्टर्स देखें, सो पहला फैक्टर तो आपका ये है कि जो इधर लिटिगेशन है, इधर बहुत ज़्यादा फ्रिवलेस लिटिगेशन की जाती है इस मुल्क में. वो क्यों की जाती है? क्योंकि लिटिगेशन इज चीप इन दिस कंट्री. इस मुल्क में वकील जो है एक तो बहुत ज़्यादा है, और क्या कहते हैं, फीस जो है लॉयर्स की वो बहुत थोड़ी हैं. एंड देन ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप केस जीत जाएं या हार जाएं तो उसका आपको कोई कॉस्ट नहीं है. अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट एनी कंट्री, आप अमेरिका की बात करें, आप ना भी डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें, आप लेसर डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, तो द लूजर पेज. कि अगर मैंने आप पे केस किया है कि जी मुकीत ने मुझे मुक्का मारा है, इंटरेस्टिंग। या मुकीत ने मुझे असॉल्ट किया है, फिजिकली हर्ट अगर किया आपने है, झूठ बोला तो आप ठीक है, मैं झूठ बोला है, मैं अपनी फीस तो दूंगा अपने वकील की, मैं आपकी फीस भी दूंगा, और शायद कोर्ट मेरे पे एक पेनल्टी भी लगाए कि आपने हमारा टाइम जाया किया, तो वो 3 फीस बेसिकली मुझे देनी पड़ेगी. 10 दफा लॉयर सोचेगा केस लेके जाने से पहले। एग्जैक्टली 10 दफा क्लाइंट सोचेगा Client कि भी मैं सोचेगा, मैं वकील लेके एंगेज जाऊंगा। करूं कि ना करूं. हाँ। उसकी वजह से वो आपकी लिटिगेशन रिड्यूस हो जाती है. इस मुल्क में आप कोई भी फैसला निकाल के देख लें, सलमान है मतलब हमारा इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इन द सेंस के 10, 11, 15 डेटें पड़ जाएंगी. इवेंचुअली यूल गो टू द जज एंड से कि सर 15 डेट्स हो गई हैं, काइंडली कुछ करें, तो कहेंगे 200 रुपये का फाइन. तो आप कहेंगे बहुत शुक्रिया आपका, चलें आप मेरा 500 रुपये का तेल लगा कोर्ट आने का, लेकिन 200 रुपये का फाइन. तो उसकी वजह से वो एक हिंड्रेंस नहीं है. फिर एक सेकंड रीजन इधर, एंड दैट्स व्हाई डिलेज हैपन बिकॉज पीपल फाइल मोर केसेस देन कैन बी डिसाइडेड. उसके साथ साथ वी हैव वी लैक जजेस. हमारे पास नंबर ऑफ जजेस इस मुल्क में बहुत कम है. क्या कहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हमारा देखें, अब अमेरिका का लोग कहते हैं कि देखें जी अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, 10 जज 9 जजेस हैं, संभाल लेते हैं, कोई मसला नहीं होता. बट लोग ये भूल जाते हैं कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट साल के 50-60 केसेस देखते हैं वो एट द मोस्ट. हमारा सुप्रीम कोर्ट कितने सलमान देखता होगा? 30-15-20 हजार. हाँ, क्या 15-20 हजार केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं. और हमारे कितने सुप्रीम कोर्ट हमारे जजेस हैं? 17 जजेस अलॉटेड हैं, कभी 17 से कम ही होते हैं यूजुअली बिकॉज पीपल की रिटायरिंग, और फिर नहीं, बट हमारे जो अलाउंस है 15-20 हजार। जी, मतलब वो दिन के तकरीबन कोई 10-15 केस होंगे. वाओ, 10-15 मीटिंग कॉल्स नहीं, मतलब कि जी. और आप ये याद रखें कि ये केसेस इनिशियल लेवल पे नहीं है, इन केसेस का बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड होता है क्योंकि ये नीचे से केस शुरू हुए होते हैं. सो देयर इज अ लोअर कोर्ट डिसीजन, देन देयर इज अ हायर कोर्ट डिसीजन, देन इट कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट. और उसके अंदर भी कभी कभी अपील्स हो जाती हैं, इंट्रा कोर्ट अपील्स हो जाती हैं कि एक कोर्ट के एक जज के पास 2 जजेस को चली गई फॉर एग्जाम्पल. तो इतना बड़ा पलंदा होता है फाइल्स का, क्या कहते हैं, जो आप सुप्रीम कोर्ट में 10 केसेस अगर इस तरह पड़े हुए, तो ऑब्वियसली वो रिजॉल्व नहीं होंगे. एंड एट द सेम एट द हाई कोर्ट लेवल, पंजाब के अंदर यू हैव एन एलोकेशन ऑफ 70 जजेस आई थिंक, अराउंड 60, बट एक्चुअली आपके 45 जजेस हैं, 45 to 50 जजेस हैं अभी. और कितने केसेस होंगे पंजाब में? वो तो बहुत ज़्यादा होंगे. अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, हमने एक रिट फाइल की थी, तो रिट्स आर नंबर्ड सिक्वेंशली हर साल के हिसाब से. 1 2 तो पता नहीं। हमारी नवंबर की वो रिट थी, वो पता नहीं 23,000 ऑफ 2021 थी. तो उससे आप अंदाजा मतलब कि लगा लें. सिर्फ 2021 में जी 23,000? जी 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 जी, लाहौर हाई कोर्ट के I've अंदर. seen like late 30s as well. हाँ. Yeah, So, that's nothing. ये आपकी एंड ऑफ कोर्स इस 23 में से सारे रिजॉल्व भी नहीं होते होंगे, बिल्कुल भी नहीं होते. आगे पास थ्रू कर जाते होंगे to the जजेस next year। बिल्कुल, क्योंकि जजेस भी ओवरबर्डन है, वो भी हर मामले में इतना नहीं घुसना चाहेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज इफ दे फोकस ऑन वन इशू, वो जो बाकी 15 केस दिन के लगे हुए हैं वो ज़ाया हो जाएंगे. सो वो सारों को थोड़ा थोड़ा साथ साथ चलाते रहेंगे. किसी में कोई ऑर्डर दे दिया, किसी में डेट दे दी, किसी में किसी को थोड़ा सा डांट दिया, किसी में दूसरे वकील को डांट दिया, ताकि काम चलता रहे बस और सिस्टम घूमता रहे. बट क्या कहते हैं, एक्चुअल रेजोल्यूशन की तरफ हम नहीं जा रहे होते. एंड देन द थर्ड रीजन आई वुड से फॉर दिस इज जस्ट द लॉ. आर लॉ, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि judges, there's an interpretive exercise that the judges and lawyers carry out. One big reason why we have to do that we have to do that a lot in Pakistan is कि हमारे laws update नहीं होते. हमारे laws जो हैं broadly speaking वही गोरे के laws हैं, जो हमारे procedure laws हैं स्पेशली, जिनमें हम छोटे मोटे चेंजेस करते रहते हैं. एक चीज़ चेंज कर दी, वो अगली गवर्नमेंट आके ओवरटर्न कर दी, या कोर्ट ने कहा कि ये चीज़ जस्टिस के खिलाफ है तो हम इसको नहीं स्टैंड होने देंगे. ब्रॉडली स्पीकिंग हमारा वही लॉ प्रोसीजर कोड चल रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, जो ब्रिटिश ने हमें बना के दिया था इन द लेट 1800s. उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिले करने की, लंबा करने की, दूसरे पार्टी को ख्वार करने की, जो ऑब्वियसली एज लॉयर्स जो करना चाहते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं. तो दैट इज़ द थर्ड एंगल जो जिसकी वजह से आपका डिले होता है, जो आपको चेंज करना पड़ेगा, प्रोसीजर आपको तेज़ करना पड़ेगा, विदाउट विच यू कांट रियली सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. So आई थिंक इस बात पे मुस्तफ़ा और मेरा थोड़ा सा इस तरह इख्तलाफ है कि आई थिंक
So just going back to the things that he's mentioned that are cause for delay, so I'll just maybe expound on maybe the same themes. One of the things you'll realize is that many litigants don't go to court to have their cases decided. हमारे लम्स में प्रोफेसर होते थे डॉक्टर उसामा सदीक. He actually did an entire study on Delays in specifically the district courts in Lahore. And one of the things that he noticed was that a majority of cases, in an overwhelming majority of cases, it was the plaintiff, the person who had filed the case, who was responsible for seeking adjournments. And the reason for that was कि आप लोग सुनते होंगे कि ये स्टे मिल गया. तो स्टे क्या होता है? स्टे का मतलब होता है कि जी अच्छा आप अदालत आए हैं और वो अच्छा झगड़ा हो गया है, अच्छा सब कुछ छोड़ दें, जो चीज़ जैसे अभी है ना वैसे रहने दें, और जब तक इस केस का फैसला नहीं होता ना तब तक कोई तस से मस नहीं होगा. ये स्टे होता है. बेसिकली इट्स कॉल्ड इन लीगल लैंग्वेज इट्स कॉल्ड एन इंजंक्शन. और इंजंक्शन भी मुख्तलिफ किस्मों की होती हैं. तो हमारी सबसे ज़्यादा कमाई शायद होती है ऑन एक्स पार्टी एड इंटरिम इंजंक्शंस. एंड आई विल डीकंस्ट्रक्ट दैट. व्हाट दैट इज कि जब झगड़ा होता है, मुकीत आपका और मेरा लेट्स से किसी ज़मीन का झगड़ा हो गया, मैं एक प्रॉपर्टी लेट्स से मेरी है नहीं है, लेट्स लीव दैट आउट फॉर अ मोमेंट, बट लेट्स से अभी मेरे कब्जे में है ना, तो मैंने जाके अदालत में मुकदमा कर दिया और मैंने कहा देखें ये मुकीत जो है मेरी प्रॉपर्टी के साथ इंटरफेयर कर रही है, तो देखें जब तक वो आता नहीं है तब तक तो आप मुझे स्टे देना कि सब कुछ जो है वो वहीं रहे. तो अदालत कहती है अच्छा चलो ठीक है, चलो जब वो आएगा तब तो इस पर बहस होगी ना. हाँ सर, प्रॉमिस बहस होगी. और फिर उस दिन का दिन और फिर 40 साल बाद उस पे कभी बहस नहीं होती. फिर मैं कहता हूँ ओ सर आज मेरी टांग में बड़ी दर्द है, ओ सर आज मेरी वादा की तबीयत बड़ी ख़राब है, ओ सर आज ठंड लगी है, ओ सर आज मुझे सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना है, सर आज मैंने हाई कोर्ट के सामने जाना है. तो वो चलते चलते अब हमारे अदालतों के सामने एज मुस्तफ़ा मैंशन्ड ऑलरेडी दिन के 100 केसेस होते हैं. तो उनके लिए तो आसान है, कोई उनके सामने लिटिगेंट आता है कहता है जी सर मैंने बहस नहीं करनी, चल एडजर्नमेंट चल, तूने मेरा काम आसान किया. So the thing is, our system is built in a way. So it's a systematic issue. I think so when we talk about procedural law, so the Code of Civil Procedure, as Mustafa said, it's a law that governs civil litigation in Pakistan. 1908 का law है. लेकिन and in Punjab we've amended it recently in its to sort of alter the way in which a case proceeds. But to be honest, हमारे अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए उस्ताद होते थे, जस्टिस रिटायर्ड इनफैक्ट आमिर रज़ा. ही तो उनसे एक दफ़ा क्लास में डिस्कशन हो रही थी एंड ही वाज अ सॉर्ट ऑफ a contrarian sometimes. उनको बड़ा शौक होता था कि पहले आपसे एक सवाल पूछना और फिर जान के ना बस आपको एंटागनाइज करना कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, even if he may have agreed with you or not. But so we were having a discussion about delays in litigation and he said look, I mean, and maybe I think in this regard he was probably right, कि देखें वही बात है, कानून जो है वो एक कोडिफिकेशन ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग है कि यार इस तरीके से निज़ाम चलाना है. एंड इफ़ यू एंड आई आर नॉट agreed on expediting the decision of a case, तो लिखा जो कुछ भी हो, we're going to manipulate it in a way that'll end up, that'll go in the direction कि हमने वही करना है जो हमने आपस में फैसला किया हुआ है या जो जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है. अब CPC even prior to its amendment, there's of course adjournment कभी कभार देनी पड़ती है. There's no doubt about it. कभी कभार something serious happens. Reason है, हाँ. There are legit reasons, right? And so obviously you have to leave some provision for it. And the Code of Civil Procedure says कि for reasons to be recorded, अगर आपने adjournment ही करनी है, आपने you have to submit reasons for it, and then the court has to say grant that adjournment on the basis of those reasons. लेकिन इसको कोई implement नहीं करता. बिकॉज अल्टीमेटली अदालतों को पता है यार अब मैं बहस में पढ़ूंगा, ये वकला हजरात हैं, ये अगर मैं इनके साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा तो दे आर गोइंग टू स्ट्रॉन्ग आर्मी, व्हिच वी विल टॉक अबाउट इन अ बिट. देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन. हम माफ नहीं करते. तो वो ये है कि रादर देन गेटिंग इनटू दैट एक्सरसाइज, यू जस्ट आई मीन द लैंग्वेज इज देयर टू लेट यू डू इट. The language is there to let you move either way. And the point is, which way are you really inclined? If you're inclined to not give an adjournment, you're empowered to do so. But if you're inclined to and you feel like you have no other choice, तो फिर it doesn't matter how much the law empowers you. अब देखें हमारे बड़े कानून हैं जो कहते हैं कि देखें इस सूरत में, so family courts for instance are mandated under the law to decide family court matters within 6 months from beginning to end. Okay. But that almost never happens where the parties don't want it.
तो वो चलता साल या साल भी चल सकता है, राइट? एंड दैट्स द केस विद अ लॉट ऑफ लॉज. सो इट्स नॉट इनफ फॉर द लॉ टू से कि जी आपने इस केस का फैसला इतनी देर में करना है, आपने इस केस का इतनी देर में फैसला करना है, वरना हम ये कर देंगे या वरना हम वो कर देंगे. बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू डोंट हैव द विल पावर, whether at the state level or at the level of the litigants, to give effect to it, then it doesn't matter what the law लेकिन होना says. चाहिए ये चीज़, ये जो आप बात कर रहे हो कि यार अगर इतना डिले से ज़्यादा हो गया तो हम ये कर स्टेट ये कर देगा, स्टेट क्या करेगा? कुछ कर नहीं सकता. the point is नहीं तो like, बाहर के मुल्कों में व्हाट्स द वो बेस्ट यही बात है ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. if everybody is content with it, that's the thing, and that's the other thing I wanted to bring up, which is that ultimately देखें status quo क्यों रहता है? क्योंकि the people there are certain people who benefit from the status quo, Yeah. and they resist change. They work hard to prevent anything from moving where उनका जो benefit है वो रोजी रोटी पे हाथ की पड़ बात जाए, है. हाँ, वही हाँ, रोजी रोटी की हाँ. बात है कि देखें अब 2016 में जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मुहिम चलाई कि जी हमने प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने हैं, हमने डिजिटाइजेशन करनी है हाई कोर्ट में, Yes. और उस पे इतनी ऑपोजिशन थी, वो लोगों ने नहीं I चलने heard दिया. उनको तो लाइफ थ्रेट्स भी आए थे, like काफी In सीन all हो गया था. likelihood, Yeah. in all likelihood, I'm not personally privy Yeah, to yeah. them, obviously, but I would imagine so. क्योंकि वही बात है, and in a sense, you can understand. I mean, it's hard to sort of justify making life threats, but I mean to say like resisting change, where आपकी वही रोजी रोटी की बात होती है. अब bringing in technology, and this is a debate I think that happens in the community as well. Okay, on the one hand, technology is great because it makes things more quote unquote efficient. But what is the human impact of technological interventions? No. And it has that same facet in the law as well कि देखें जो किसी की कमाई रोजी रोटी एक काम में लगी हुई थी कि अच्छा कोई मुंशी वो जाता खत्म हो था, वो जाएगी. ये वो करता था, अब उसका वो रोल ख़त्म हो गया है, तो वो फिर ऑब्वियसली उसे रेजिस्ट करेगा. अब एक रिफॉर्म जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा while he was चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट ही ट्राइड टू डू वाज कि एक चीज़ होती थी, है खैर कानून में 22 से 22 बी की, कि कोई आपकी FIR नहीं काट रहा तो आप 22 से 22 बी की दरखास्त मूव करते थे और जस्टिस ऑफ द पीस डायरेक्शन देता था और वो FIR कट जाती थी. तो ये मतलब एक रोजी रोटी का तरीका था. And Justice Asif Saeed Khosa came and said, okay, from now onwards, 22A, 22B applications will not be entertained by the courts. You will go to the Mutalka, you will go to the police, you will go to, I think it was the SP, Mutalka SP, who would then entertain that application. So the lawyer was cut out of that process. अब वही बात कि आपके जो महीने में 60-70 हज़ार रुपए उन applications में जो रूटीन में अब फाइल होती थी वो अब नहीं आ रही. So people were outraged. Of course. Because it wasn't a matter of giving people justice anymore. लोगों को तो फिर भी justice मिली थी ना. अब वो पहले अदालत जा रहे थे, अब SP के पास जा रहे हैं. But रोजी रोटी की बात. So there are people who always benefit, and not to say that that's necessarily something that we should begrudge them. कि ज़ाहिर बात है कि we have systems in place and people rely on those systems. When you have to transform them, you have to account for the human impact of these interventions. And that's something to bear in mind. Yeah. That's also, I guess, a part of the reasons why we have a lot of delays is because there are a lot of people who benefit from these delays. कि अब मुझे ज़मीन पे स्टे मिल गया है, अब मेरा क्या इंसेंटिव है कि मैं बहस करूं? क्या इंसेंटिव है कि मैं इस केस का फैसला कराऊं? If I am the culprit, I would like to यार बस चली जाए. And also I'm sure there's a political economy in the legal system, judiciary as well, जहाँ पे judges के साथ ताल्लुकात ये वो. Probably this thing works, मतलब कि well, we're not at liberty to comment on that. So. Yeah, of course, but this is something I imagine कि यार वो relationships वाला aspect जिस तरह government के अंदर और aspects of आपके executive के अंदर feed in करता है, politics के अंदर करता है, इधर भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ आती होगी. which जैसे just piggybacking off your point, अब स्टेज की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो आपकी जैसे LDA के साथ आपका कोई मसला है, अब LDA का क्या है, LDA का जो बंदा है, जो इंस्पेक्टर है, जो आपको कह रहा है कि आपकी बिल्डिंग इलीगली बनी हुई है या आप इधर पार्किंग स्टैंड बना रहे हो, उसको ऊपर से आई हुई है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है. जब आप स्टे ले लेते हो वो भी खुश है, कि मेरा भी काम रुक गया है, बस ठीक है, अदालत के पास है, क्लाइंट भी खुश है. तो वो जो लाइक टू सलमान्स पॉइंट, जब especially when you're dealing with इदारे and the police and these like enforcement agencies, कोई भी हो, उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई खास काम करने का, और उनको भी कोई इंसेंटिव है नहीं, तो वो भी स्टे से खुश होते हैं कि चलें जी हमारे सर से उतर गई है. अब हमारा बॉस अगर कहेगा कि तुमने मुस्तफा को क्यों नहीं उठाया, तो हम कह देंगे जी मुस्तफा ने स्टे लिया हुआ है, अब जाके अदालत से बात करें आप. एंड ऊपर जो पूरा सिस्टम है आपके स्टे को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मतलब बिल्कुल ऐसे ठीक है. That I mean there's a lot to happen, like from the government, from the lawyers to the judges,
everyone needs to sort of play a role. अगर आपने ये it's not just कि अच्छा यार ये बस solution है. Yeah. It's like a pretty हमारा complicated I machine. think one big problem is why like obviously the state and like the lawyers and the judiciary, all of these institutions have tried to take steps, but हम in unison steps नहीं लेते. Unison नहीं लेते. कभी स्टेट आती है और कहती है कि जी हमने CPC अमेंडमेंट्स कर दिए, अब हमने प्रोसेस सिंपल कर दिया, लेकिन जुडिशरी को लॉयर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया होता अकॉर्डिंग टू द लॉयर्स. तो वो चीज़ रिजेक्ट हो जाती है. लॉयर्स कहते हैं नहीं, जैसे हमारी रोजी रोटी है, या वो और दे मेक अदर आर्ग्यूमेंट्स के नो दिस इज अनफेयर. कुछ पॉलिसीज होती भी रिडिकुलस. अब जैसे हमारी CPC अमेंडमेंट्स आई, उसमें एक ही अमेंडमेंट उन्हें टू क्विकन अप द प्रोसेस होता ही है कि अगर आप केस फाइल करते हैं मेरे और सलमान के खिलाफ, तो एक काफ़ी टाइम लगता है कि सलमान आएगा, अपनी हाजिरी लगाएगा, फिर सलमान को कॉपी मिलेगी पिटिशन की, फिर सलमान उसका जवाब बनाएगा, जवाब देगा. तो उन्हें एक अमेंडमेंट में ये कहा कि जी जितने इसके डिफेंडेंट्स हैं उन सारों के लिए आपने कॉपी करवा के कोर्ट में ही जमा करवा देनी है. उससे हुआ क्या, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में 200 डिफेंडेंट होते हैं, पूरा आपने मोहल्ला डिफेंडेंट बनाया होता है. अब वो प्लेंटिफ ने कहा कि यार मैं कहाँ से फोटोकॉपी की फीस दूं. उनके वकीलों ने भी कहा हम तो नहीं दे सकते. अब 200 पेज की अगर आपकी फाइल है और 10 डिफेंडेंट्स हैं आपके, तो आपकी फोटोकॉपी कॉस्ट इतनी आ जाएगी, एंड यू नो के पेपर जाया होगा, कुछ होगा ही नहीं इसका. तो बात उधर ही खत्म हो गई. इस तरह की छोटी-छोटी चीजें हैं और नहीं पता होता यार. एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता क्यों डिले हो रहा है. अगर वो बंदे को पता चले फोटोकॉपियां नहीं हो रही थी इसलिए डिले हो रहा है, मतलब ठीक है. दैट कैप्चर्स द इमेजिनेशन. देखें फोटोकॉपी वाले की हमने कमाई आपने रोक दी. ये बात. अच्छा सलमान, अभी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया था अबाउट, एंड आई जस्ट वांट टू स्विच द गियर्स अ बिट, अबाउट टेक एंड किस तरह आपके लॉ को इवॉल्व करना चाहिए. सो आजकल हम देख रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर लॉट ऑफ वेंचर कैपिटल कमिंग इन, न्यू कंपनीज आर कमिंग अप, टेक कंपनीज आ रही हैं, एंड बायर का जो बायर मतलब कि इस तरह की यंग कंपनीज, अर्ली स्टार्टअप्स, स्मॉल बिजनेसेस, थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी मैच्योर कर चुके हैं. उन्होंने उसके लिहाज से अपने लीगल सिस्टम्स भी इवॉल्व किए हैं. नाउ दिस इज समथिंग न्यू हैपनिंग इन पाकिस्तान. सो फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ लॉयर, हमारा लीगल सिस्टम इन स्मॉल बिजनेसेस, इन यंग कंपनीज को facilitate करने के लिए किस तरह इवॉल्व या अडेप्ट कर रहा है? Is there anything interesting happening in this space? So as of late, I mean, I think for anybody operating in the startup space and in tech or otherwise, so e-commerce is picking up quite a bit. Yeah. A great thing that we're seeing is a lot of proactiveness, both on part of the state bank, on part of the Securities and Exchange Commission of Pakistan. And also in a sense from the legislature as well. So SECP को empower करने का obviously legislature का भी काफ़ी बड़ा role रहा है. With the New Companies Act, a lot of sort of more liberties been given to the SECP to so maybe I'll take a step back and explain कि ordinarily ये होता है कि आप कानून एक बनाते हैं तो legislative process हमने अभी सुना, legislative process अभी हमने समझा, it's slow and it's cumbersome. तो डे टू डे बेसिस पे कि अच्छा जी अब स्टार्टअप्स की हमें रेगुलेशंस बनानी है, अच्छा अब स्टार्टअप्स ने फंड रेजिंग करनी है और स्टार्टअप्स एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस देना चाहती हैं, लेकिन हमारा कानून ज़रा आउटडेटेड है, इसको अमेंड करना है. सो द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एट द नेशनल लेवल और एट द प्रोविंशियल लेवल इज़न्ट फास्ट इनफ. एंड अब दुनिया भर में specialized agencies को ज़्यादा इख्तियार दिया जा रहा है to create regulations, to create basically which are also laws, but because they're on the ground and they're dealing with these people on a day-to-day basis, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं because they're specialized. अब SECP में कौन लोग बैठे होते हैं? They're experts in economics, banking and finance, law. So they have all of these people sitting together and they say कि हम अच्छा this is where we see the current the ebb and flow of the law going. This is what's going to facilitate things more. So let's create this regulation. So from the SECP, we've seen a lot of really great initiatives where they've created a regulatory sandbox, for instance, where they say अच्छा अब कुछ नए areas हैं, like for instance, P2P lending or even fintech, fintech, etc. Where so with fintech we still have a more evolved ecosystem now, from a legal point of view, but a lot of things we just don't have laws for. We don't know what to do with. One example, for instance, is cryptocurrency, जिसकी आजकल बहुत समझ नहीं आ रही, इस पे हो क्या confusion रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि है क्या, कैसे से रेगुलेट करना है, या बैन हो is it a commodity, is it a currency, is it what is it? ठीक है, वो किसी को समझ नहीं आ रही. And in fact we don't see as much activity on that front just because I think in that case, way too many people have gotten involved on many different avenues. So there's a case in the Sindh High Court, there's a case in the Lahore High Court, and the courts have gotten involved. The SCP is being called in, the state bank's been called in. The state bank has, in fact, prohibited through a circular
the transacting in cryptocurrencies, and now the FIA has been going after people कि आपके credit card से आपने क्रिप्टो लिया तो नहीं था खबरदार वरना but I mean moving aside from that, like for things that are slightly less controversial, they've created this regulatory sandbox where हर साल वो they invite people कि अगर आपके कोई tech related किधर बना हुआ sandbox exactly? It's not a physical sandbox, Choco. It's not an actual box full of sand. It's a concept. It's a concept. Basically, it's an incubator in a sense. Not an incubator. मतलब कि वो हाउस किधर है? So I'll explain. So the SECP, कोई चेयर करता कोई discussion. It is housed on the SECP website. And the idea behind the regulatory sandbox is कि देखें आप एक नया ecosystem पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई regulatory framework नहीं है, तो आप ऐसा करें rather than getting into the ambiguities के कल को आप कुछ कर रहे हैं और आपके पीछे कोई regulator आके आपको notice issue कर दे investigation का. You file an application with the SECP, and this SECP says, join our they vet your application, and they say, this is something interesting, this is something we want you to develop within the purview of our regulatory framework. और आप अपना काम करते रहें, हम साथ साथ इसको monitor करेंगे, आपको approvals देते रहेंगे ताकि आप इसको test करें. Because a lot of times when you're developing products, like for instance P2P lending, अब एक बंदा दूसरे बंदे को लोन दे रहा है, this is something unconventional because ordinarily lending is the prerogative of banks, and पाकिस्तान में चलती तो है कि अच्छा आपने किसी से कर्जा ले लिया लेकिन वो फिर आपको सूद पे बहुत भारी सूद पे देते हैं what not. So it's something that you would potentially want to regulate, but maybe you don't have an ecosystem for it. So what you say is you invite businesses like these, and you let them test their platform and make offers in a restricted sort of offer these products for usage to the public in a limited way in the sarbarai of the regulator, which is the SECP, and they basically help you grow and they grow with you. So they use that process to devise a regulatory framework and learn about that ecosystem so that you can do your business easily rather than facing problems. That's a great initiative. And you can find the registration process, the application process for the regulatory sandbox on the SECP's website. Sandbox. Mukeet ko loves bahut pasand hai. Loves it. It's a very nice word. But that's exactly what it is, right? Ke sandbox is a place where young people and also young ideas go to experiment, to grow, to play with the sand, to see, इसमें से कुछ निकला अभी तक, by the way, अभी तक has anything tangible come out of this sandbox? So it's a relatively young process. I think maybe it's in its second or third iteration right now. Second iteration. So a lot of the ideas you'll begin to hear of. And I think I may be mistaken. I'm not entirely sure, but maybe in fact, yeah, I mean, maybe I shouldn't say this is something that's best. You can have a look at going onto the SCP's website पे जाके explore कर लें. Right. ठीक है. And just adding to that, the idea of the sandbox is not to create 15 companies जो बिल्कुल sandbox से निकलें और private. The point is to test. So there will be a high failure rate in the sandbox. Yeah. Because you're dealing with so you have crypto companies, for example, of just like personal knowledge. There are crypto companies who are trying to get into the sandbox and experiment. Because as Salman highlighted, there are too many cooks in the cryptocurrency space. Yeah. State Bank अपनी बातें करता है, SECP अपनी बातें करता है, courts अपनी बातें करते हैं, government के ministers अपनी बातें करते हैं, तो कुछ समझ नहीं आती कि policy क्या है. अभी कल परसों सिंध हाई कोर्ट उस पर बात चल रही थी कि they might ban it. हमारे जो मिनिस्टर हैं शिबली फराज साहब उनने काम लीगलाइज कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं. कंफ्यूजन रहती है, बहुत कंफ्यूजन है. सैंडबॉक्स में यही फायदा है कि बिकॉज यूर आउटसाइड यार बस ये बता दें हम पैसे रखें क्रिप्टो में निकाल लें. आप इसका प्लीज जवाब हमें अभी दें. आपका तो फॉरेन बैंक अकाउंट है, आप रख लें, कोई मसला नहीं. ठीक हो गया. अगर लोकल अकाउंट है तो जरा एक दफा देख लें. सही. ठीक है. So basically काफी चीजें हो रही हैं. These are some of डिजिटाइजेशन बहुत की है, मतलब ऑन अ बेसिक लेवल. ये तो हम थोड़े हायर लेवल बातें कर रहे हैं कि आप इफ यू ट्राइंग टू कम अप विद अ न्यू बिजनेस मॉडल, तो देन द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स वर्क्स फॉर यू. देयर आर अदर लाइक लिटिल थिंग्स. Go back a couple of years, it was difficult to make a company in the sense you had to go and physically, basic company अगर आपने बनानी है, अपना कारोबार शुरू करना है, you can now do that online. It takes a couple of days. Okay. You don't need to be a lawyer to do it. मतलब कि एक कंपनी अपनी रजिस्टर कर सकता हूँ ऑनलाइन. आप बिल्कुल कर सकते हैं और आपको वकील की भी जरूरत नहीं है. एक सेकंड में वैलिडेट करेंगे. हमारे पास एक स्मॉल बिजनेस ओनर यहाँ बैठे हैं. क्या ये बात सही है? बिल्कुल. ये क्या कहते हैं, जो स्मॉल बिजनेस ओनर बैठे हैं वो मुझसे ही करवाते हैं अपनी कंपनी, लेकिन इनको आता है काम. ठीक है. तो वो रोजी रोटी हमारी भी रोजी रोटी तो पूरी होनी है ना.
So ठीक है another like initiative they're taking is a big hurdle that businesses face, like especially startup businesses, because Salman and I deal with a lot of startup companies. तो Yeah. खबर आ जाती है इसके कंपनी आपकी बन जाती है, बैंक अकाउंट नहीं खुलता था। वो होता ये था, बैंक कहता था नहीं जी ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, या अगर ये नहीं होता था तो बहुत केसेस में लाइक दीज कंपनीज, दीज स्टार्टअप्स आर बीइंग मेड बाय पीपल ऑफ आवर एज। Yeah. कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, उसने कंपनी बनानी है। वो बैंक कहता था जी हमारे सामने पेश होएं, हमें मिलें, हमें हाथ मिलाएंगे, वरना हम अकाउंट नहीं खोलेंगे। So one thing that the SECP has now done to make it simpler is just to integrate the account opening process with the company creation process, Oh, or like, at जबरदस्त। least they're planning to do this. Nice. Start कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता उसको रोल आउट कर So रहे हैं। basically कंपनी खोलना और बैंक अकाउंट जी। ओपन होना जब simultaneous आप हो अपना जाएगा। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करेंगे तो आप जो अपने डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि ये हमारे CEO हैं, ये हमारे डायरेक्टर हैं, ये ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, तो ऑटोमेटिकली सही। इन्फॉर्मेशन प्राइवेट बैंक्स को चली जाएगी एंड यू कैन चूज कि बहुत किस आला। बैंक के साथ आपने That's अकाउंट great. खोलना है। That's तो pretty- अच्छे स्टेप्स भी किए जा रहे हैं That's उस amazing. सेंस में। अच्छा मेरा एक यहाँ पे एक क्वेश्चन, इट माइट और माइट नॉट बी रिलेटेड, बट लॉट ऑफ दीज कंपनीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, दे गो टूवर्ड्स वेंचर कैपिटल मनी एंड बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स रेज कर रहे हैं, 10 मिलियन 15 मिलियन 100 मिलियन, पता नहीं कहाँ तक फिगर्स इस वक्त जा रहे हैं। बट फिर हम ये भी सुनते हैं कि यार ये जो पैसा रेज करते हैं इन सब का जो बैंक अकाउंट होता है वो सिंगापुर में होता है, पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट खोलने से रेजिस्ट करते हैं, या आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज, बट आई डू हियर कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं कहते हैं सिंगापुर के अंदर अपना मनी हाउस करते हैं, दे ब्रिंग एज दे नीड। इज दैट अ प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेशन, इज दैट प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी कि क्यों डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर वो पैसा नहीं आता है? आई नो इवेंचुअली तो ऑफ कोर्स आता है, बट व्हाई डोंट दे हाउस इट हियर? I think it's a bit of both. So obviously when you're dealing with एक तो it's an image problem. When you're dealing अब foreign investor हैं आपके अमेरिका में हैं, गोरे हैं for all, मतलब intents and purposes वही होते हैं, गोरे ही होते हैं mostly, जिनसे आप रेज कर रहे होते हैं at least the bigger amounts. Yeah, those also. मतलब हाँ तो क्या कहती हैं ये सही है, कोकोनट्स। कोकोनट्स। तो वो obviously a lot of these people, and to an extent fairly so as well, but not as much, but they don't trust like the Pakistani banking system. आपको एतबार नहीं है कि कल आपकी गवर्नमेंट, और हिस्टोरिकली हुआ भी है 90s में गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं बैंक अकाउंट्स, लोगों के डॉलर अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं, शायद वो आज ना कर सकें, सिचुएशन हैज चेंज, पर लोगों के दिमाग में होता है कि यार पाकिस्तान में पैसे गए, गवर्नमेंट ना ले ले, गवर्नमेंट तंग ना करे। फिर उसमें टैक्सेशन के एलिमेंट्स हैं कि गवर्नमेंट क्या टैक्स, नोटिस आ जाता है, बाहर से पैसे आए हैं, $150 मिलियन मेरे अकाउंट में आए हैं, बाहर से किसी कंपनी ने रिमिट किए हैं, तो अगले दिन नोटिस आ जाएगा आपको कि कहाँ से आए हैं, फिर वो आपको जस्टिफाई करना, समझाना, ये करना, वो करना। सो उस तरह की भी रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स भी हैं, अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है, बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट बाहर से पैसे आने का वो एक ही है, रेमिटेंस, जो हिस्टोरिकली हमारा मुल्क जिस पे चल रहा है, ये चीज जो है अभी वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता। फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल विच इज लाइक द डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू विच इज द लॉ बेसिकली विच एक्सप्लेन्स कि कैसे पैसे आ सकते हैं, कैसे जा सकते हैं फॉरेन करेंसी, उसमें रेगुलरली अमेंडमेंट्स, उसको भी आई एम नॉट टू well versed in like the recent amendments that have been made, but there have been amendments made on that front as well, कि कब पैसे आप ला सकते हो, कब आप भेज सकते हो, उस पे टैक्स रेट्स क्या होंगे, प्रोसेस क्या होगा, सिंप्लीफाई किया जा रहा है प्रोसेस, बैंक्स के थ्रू किया जा रहा है एज अपोज टू पहले वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स बहुत थी, सो वो हो रहा है काम, बट यही मेन रीजन इज ट्रस्ट and regulation, and Salman would like to add. I think again it's an interesting way in which sort of the law creates costs and incentives and disincentives for people to do things. So I think just building on Mustafa's sort of description of the image problem, it's not just an image problem, but it's also a compliance problem, right? For an investor, a VC fund, to justify sending money to Pakistan, which is often flagged as a state that is, but we're on the FATF list. We're on the FATF list, so money coming into Pakistan for them is controversial. But it's easier for them to put money into a Singapore company, and because the Singapore entity is owned by or it owns the Pakistani entity, तो फिर वो कंपनी वालों का मसला बनता है ना कि उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। फिर वीसी कहता है भाई मैं खुश हूँ क्योंकि पैसा तो उनका इवेंचुअली पाकिस्तान ही आना है, आना तो पाकिस्तान ही है। So their problem isn't so much that once the money goes it's stuck there, because in a sense VCs know that they're writing it off, right? Because as you know, most startups fail, and VCs know that. They're sort of putting their thumbs in as many pies as possible just in the off chance that one works. So the money has to come here, and there's not a solid expectation that it'll necessarily come out. They also, although there is the tabakko कि अच्छा यार ये चल जाती है तो at least remittance of profits, like you should be able to repatriate your profits abroad. The problem largely is of
what you have to do in order to put that money in. क्या लोग हज़ार सवाल पूछेंगे, अच्छा जी पाकिस्तान जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हमें कैसे पता है कि ये कंपनी हाफिज़ सईद की कंपनी नहीं है, Too many जस्टिफाई questions. करें, ये करें, Yeah. वो करें. Mm. That's again that's sanctions and reporting requirements are the way that you sort of chill a country's economy. कि आप Iran जो है, आप now Iran is under so much pressure just because it's sanctioned. It's on the US. The Yeah, US heavily sanction list, sanctions yeah. it. It's on the UN because of the US has sanctioned it, Yeah. and as a result. I mean, it's horrible. Like, even if you find a great investment opportunity there, even नहीं if कर you're सकते, willing to नहीं take the कर risk, सकते आप. you can't, because the cost is so Too high, that's and very that's well. and that's precisely why you need to sort of know कि अच्छा यार ये जो legal infrastructure है, इसको हम किस तरीके से I mean, it's integrated. I mean, you would think कि अच्छा the Pakistani legal system, in a sense, it does sort of operate in its own sort of way in isolation, but it's also integrated with the larger world system in this way, okay, because of globalization and because of the movement of capital across borders. This is how sort of people run into issues and run into complications. And in some ways, I guess there's not very much we can do about it, except to try our very best to jump through the hoops that the Jump through the Financial hoops, Action yeah. Task Force wants us to get off the grey list and improve our reputation as a place where you can, at least with some degree of certainty, Are put we in money. अब पता है न्यूज़ पे जो भी चल रहा था, and again it might not be something in your part of your profession, but are we making any progress on the FATF list? कोई actually अच्छी चीज़ें हो we रही are. हैं? Okay. FATF ने आपको दिए थे around 23-24 points, हाँ. जिन मतलब एक्शन एरिया जिन पे आपने काम करना था. उसमें टेरर फाइनेंसिंग थी, उसमें ये जो ट्रस्ट पाकिस्तान में खुल के इनने हमारे एल्डर स्टेट्समैन हाफिज सईद का नाम लिया. तो जैसे एंटिटीज बनाई हुई थी लोगों ने, उनके थ्रू फंडिंग हो रही थी कश्मीर में जहाद के लिए, बाकी इलाकों में तो वो उन जहाद पे के लिए. कंट्रोल करें. तो वो गवर्नमेंट को टास्क दिए गए थे. द गवर्नमेंट हैज डन, I think from what I last read, they've completed 22 out of the 24 action plans. So we're getting there. But then at the same time, ek to this is not purely this has a political element to it as well. The FATF action plans and generally like associating money laundering and these problems with the state of Pakistan. Well, that's open. Ye conspiracy theory nahi hai. That's how global, it is. that's how global politics works. अभी जो recently, because आपने सवाल पूछा है, एक जो धचका शायद हमारी इस फैटिफ लिस्ट से निकलने को लगने लगा है कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान वांट्स टू सेट अप एन अकाउंट फॉर अफगानिस्तान. तो वो एक चंदा अकाउंट खोलना चाह रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए. एहसास प्रोग्राम फॉर जी, अफगानिस्तान. उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक नहीं खोला अकाउंट. उन्होंने जवाब भी दिया कि अगर हमें खोलेंगे, बिकॉज अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अभी रिकग्नाइज नहीं है, इट्स स्टिल द तालिबान, दे डेजिग्नेटेड एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूएन. तो जो हम चंदा उनको देंगे तो फिर हम टेररिस्ट को चंदा दे रहे होंगे लीगल टर्म्स में. तो ये प्लीज आप ना करें. तो इस पे खान साहब ने भी फैसला करना है कि क्या आगे किया जाए. बट या वी आर गेटिंग देयर होपफुली. दे से आपकी कोई रिकमेंडेशन? चलो, थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन. थैंक यू फॉर द आई थिंक द नेक्स्ट मीटिंग इज इन February. तो फिर उसमें देखा जाएगा कि हम लिस्ट से निकलते हैं नहीं निकलते. बट लाइक आई सेड, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड. इट्स नॉट जस्ट टिकिंग द बॉक्सेस. There are other things that are going on in the background. Because it's what's really interesting to see is that most of the money that is laundered around the world doesn't end up in Pakistan. What's interesting is, no, think about it. Like, where do you find all of the like, where are tycoons buying up property, making investments in real estate? It's in London. It's in the UAE. US. It's in the US. Yes. Absolutely. It's in the Bahamas. It's in Mauritius, in the Cayman Islands. Yeah. And I mean, but surprisingly, we're on the FATF list. So not to say that we're blameless, absolutely not. And again, this is not my area of expertise, so I don't want to make any statements. Of course, yeah. Because to be honest, I don't know well enough. But there is definitely more to it than just the fact, because you would think that complying with all but 2 sort of action points would at least earn you delisting from the grey list, and to say, okay, well, you comply with the remaining 2 items within a period of time, or we'll put you back on the grey list. That would be one way of going about it. Given that we complied with an overwhelming majority of them, you would think giving us more time. I shouldn't say more again, because this is I don't know enough about it. But yeah. नहीं, आप जो भी बोल रहे हो ना, बहुत अच्छा लगता है सुन के, because the knowledge is immense. It's like
अब नॉलेज की सी में घुस जाते हैं। खैर क्या बात है। यार आई नो वी ये आर वो नॉलेज का कैनाल है जो कैनाल रोड कैनाल पे नहीं, रोड कैनाल नहीं है ना जरा पानी जो है यू नो इट्स अ लिटिल सस्पेक्ट, सो डोंट बेथ टू मच इन इट। कुछ पता नहीं इसमें और क्या कोई गाय माज नहा के गई हुई है, सो बी केयरफुल, वी आर जस्ट गिविंग यू अ डिस्क्लेमर। ओह यार ओह अच्छा खैर आई नो वी आर आई थिंक अप्रोचिंग आवर टाइम। बस मेरे एक दो और कुछ सवाल हैं एंड अगेन आई change the gears again from this tech and young business aspect to talking a bit about I think you mentioned earlier Saman, regulation of the legal profession itself. आपके ही भाई बहन हैं जो जो बार एंड जी जी। जो जेल रोड के ऊपर पकड़ के आ गए थे. I mean they are part of your profession. Like I said at the start of this podcast, गलती सारों से होती है। गलती आप से यार लेकिन आप ये बताएं, एक तो आप लोग हैं जी। पहला कत्ल तो माफ। एक आप लोग हैं हाँ। ठीक है, और फिर एक वो भी साइड है ये जो हम बाहर देखते हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ बार एंड प्रॉब्ली व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रिक्शन जो हमें रिफॉर्म्स करने में लाते हैं, दे आर पार्ट ऑफ इट. ये हैं ज़रा थोड़ा समझाएं हैं कौन और ये इतना मसला क्यों क्रिएट करते हैं, एंड परहैप्स जो मेन क्वेश्चन, व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट टू द सिस्टम एज वेल. You want to take a crack at that one? I know it's again a world Yeah. of but anything that any just few 2 cents you can give on the idea of bar and importance and the problems. Chale, so I mean we're relatively junior members of the bar, so I think maybe we can offer our very sort of not a robust opinion, well developed opinion, but what you would call our 2 cents, and maybe I can start on that. अब आपको अभी तक एहसास हो गया होगा कि मैं ज़रा एकेडमिक माइंडेड इंसान हूँ, तो मेरी शायद बातें लोग सुनेंगे और कहेंगे क्या व्हाट इज दिस ये क्या बात कर रहा है, ये तो समझ ही नहीं आई, मतलब ये स्टुपिडिटी है. बट मेरा एटलीस्ट ये नज़रिया है, माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस. आई मीन इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, and I think for Mustafa and me, again, we're in the sort of broader community, legal community. Maybe we don't participate in what is known as bar politics as much. जो bar की active, आप रोज अदालत से फारिग होके going to the bar room, sitting with everyday lawyers, listening to and talking to them about how they see themselves as part of this larger community. How they see themselves as professionals, if they see themselves as professionals. So again, but अच्छा सलमान, अभी एक पॉइंट आपने अर्ली इन द कॉन्वर्सेशन शायद मेंशन किया था अबाउट रेगुलेशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन, एंड व्हेन वी थिंक अबाउट दैट आपके इसमें एक बार आ जाते हैं, वो आपकी ही फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, आपके दोस्त हैं सारे आपकी इस प्रोफेशन से ही हैं, बट वी सी के यार काफ़ी मसले भी उनकी वजह से क्रिएट होते हैं. हमारे एटलीस्ट एज एन कॉमन सिटीजन मैं देखता हूँ कि भाई जेल रोड के ऊपर उन्होंने उस आए हुए डंडे लेके ये डाला है वो डाला हुआ है, कोई चीज़ आगे चलानी हो नहीं जी, डंडे लेके पहुँच जाओ, रोक दो, सारा कुछ आप कर दो. दूसरा रास्ता ले लिया करें. कौन सा? किसी और रोड से चलें. अच्छा ठीक है, मसला तो नहीं है. मतलब कि ठीक है, हाँ, दैट इज़ वन वे, दैट इज़ वन सोल्यूशन. लेकिन अगर आप थोड़ा सा जस्ट हेल्प अस लर्न के यार ये बार की इम्पोर्टेंस क्या है और इसके वजह से जो मसले मसाइल आते हैं ये क्यों आते हैं, एंड प्रॉब्ली यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट इन दिस डिस्कशन एट ऑल, लेकिन जस्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द रोल ऑफ बार एंड अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अबाउट द प्रॉब्लम्स ते उधर से आती हैं. So I mean it's a complex issue, and to be honest, I mean Mustafa and I are both junior members of the bar, so our view is obviously a bit immature, but I'll share my thoughts जो tentative हैं अभी तक. I think so as far as the importance of the bar is concerned, the bar is incredibly important. What is the bar? I mean, the bar is the broader legal community. That's what we call the bar. So the bifurcation being the bar and the bench being judges, the bar being the lawyers. And we talked about how the legal profession works. They have to work in concert. They're like parts of the same machine. Now, I think historically speaking, the way that the bar evolved, and even other vocations. So the thing is, law is a vocation, just like, and I think many people would argue a profession, if you will. Okay? A lot of what we do, it's something that you learn by doing. So जैसे बार में
उस्तादी और शागिर्दी का बहुत एक गहरा जो है वो it's very deeply rooted and entrenched in our system कि हम अपने उस्तादों से सीखते हैं. It takes us years and years. It's not enough for us to do a law degree. जब हम डिग्री करके आते हैं तो we don't really know what it's like to litigate in court, how to convince somebody of our point, how to research a point of law in an effective manner, how to present ourselves in court, etc. That's something that takes a lot of time. And for that, the legal profession and the bar is very important because we rely on our seniors to teach us. But at the same time, I mean, as with any other sort of vocation or profession and as any other kind of shobha or business, it requires some amount of regulation. And I think one of the main problems with the legal profession, as with other, I think, professions that are self-regulated, which includes the medical community, which includes architects, for instance, is हालांकि historically एक tradition रहा है self-regulation का कि हम professionals हैं, we have a strong sense of core ethics related to our profession and we are best placed to police them. But the problem is that if the people who are supposed to reprimand you are also the people who are people you have elected, what is the likelihood that they're going to reprimand you if they have to come back to you in the case of bar associations, for instance, in Pakistan every year, and in the case of the Bar Council, which is the regulator in Pakistan of, the bar councils, क्योंकि हर सूबे का एक bar council होता है for licensure up into the High Court, और Supreme Court का license आपको पाकिस्तान बार काउंसिल देता है, और पाकिस्तान बार काउंसिल की sort of सुपरदारी होती है over the provincial bar councils to an extent as well. और उसमें ये है कि अगर आपके लीडरान जो है सारे हैं, they're people you're electing, then what is the likelihood that they're going to discipline you? Now, discipline in the legal profession is very important because if a lawyer, मतलब लोगों को इतनी complaints होती हैं कि यार मेरा वकील मेरी property उसने मार ली, और he did not abide by what are the stipulated professional ethics in the law, या he misconducted himself, या उसने किसी judge के साथ बदतमीजी की, which is a very common occurrence. The law regulating lawyers says that it's the bar council's responsibility to reprimand them. There's a committee created by or under the law that has to do that. But you almost never hear कि किसी वकील का license permanently revoke हुआ है. Suspension होती है तो बहुत थोड़े अरसे के लिए होती है, and cases don't move very quickly. And that's why you see lawyers going crazy. Maybe and particularly in Punjab, it's a very big problem. And for instance, I mean, at least I personally don't know, and given that I belong to the community, it's worrying कि मुझे नहीं पता कि PIC incident के बाद अगर कोई, if anybody was disbarred as a result, and people, I mean, there was very serious damage to property, and if I'm not mistaken, people lost their lives क्योंकि लोगों ने जाके ventilators से की तारें खींच ली, and I mean, when you storm a building, you're bound to do very serious damage, and you wouldn't imagine that people who are professionals would get away with doing that, but they do. And I think what we describe as regulatory capture in conventional economics is an important facet of why it's the legal profession, in my opinion at least, suffers as much as it does from under-regulation. The other problem is that, as with other things, I think bar politics there's a life of its own, and either you're a part of it or you're not. So there's a very large part of the lawyers community which maybe is ostensibly the silent majority, which isn't part of what is known again as bar politics, कि जो electioneering होती है. And in a sense, I guess it's a good thing with democratization कि भाई आप what are the demands of the वकील community कि वो हमें voice करनी चाहिए. But in my view at least, so there can be a bifurcation between articulating the interests of the lawyers community, which is a bar association's job. जो बार काउंसिल है, जो रेगुलेटर, उनका सिर्फ ये काम करना है कि यार मेकिंग श्योर दैट द राइट पीपल गेट लाइसेंस, कि ये बंदा लीगल प्रोफेशन में आ रहा है, ही इज़ गोइंग टू बी एडवाइजिंग पीपल कि कल को भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये अमेंडमेंट आई है, आपने इतना टैक्स देना है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस में ये तरमीम आई है और आपकी अब अपने वर्कमैन के हवाले से ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं. You need to make sure that someone is able to do this, right? You should be establishing thresholds कि जी आपने एग्जाम्स देने हैं, आपने कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन अपनी करनी है, हर साल आपने इतने मिनिमम कोर्सेज करने हैं. These are the things that a bar council should ostensibly be policing. But and to be fair, like there are lots of members of the legal community in these office holders and who are pushing very hard for this, and we're very proud of them.
but there's also a lot of resistance to it. of course. Because Just like it's, anywhere as we said, जो आपके entrenched system होता है, जो status quo होता है, it resists this kind of change because it doesn't benefit anybody to change it. अब जैसे लीगल प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो कॉम्पनसेशन का है. अ लॉट ऑफ रीजन, बिग रीजन वाई पीपल डोंट बिकम लॉयर्स, इसके यार मैं 3 साल फीस दे रहा हूँ और मैं एक लॉ डिग्री लेके ग्रेजुएट कर रहा हूँ और मुझे तनख्वाह पहले साल शायद नहीं मिलेगी, शायद पहले 5 साल खुद खर्चा भरना पड़ेगा. Now in that situation, like what will you do? I mean, if you're not receiving adequate training as part of your law degree, because again, legal education is very poorly regulated. अभी तो फिर मतलब the Legal Education Committee of the Punjab Bar Council is still sort of pursuing लॉ कॉलेजेस जो अभी तक 3 साल का LLB ऑफर कर रहे हैं और लोगों को झूठी कसम दे के उनसे पैसे लेके, I mean, I'm not again familiar with what sort of the investigative process has unearthed so far, but I know that this has been happening. But it's such a difficult process. हालांकि ये लोग करते रहे हैं. So just for context, by 2018 जो 3 साल का LLB था वो फेज आउट होके 5-year BLLB प्रोग्राम इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया by the orders of the Supreme Court, and then subsequent to that law colleges were not permitted to offer 3-year LLBs anymore. But then कुछ लोग फिर भी ऑफर कर रहे थे और कह रहे थे कि हम आपको बैक डेट में कर देंगे. That's illegal. And the Bar Council is still having so much trouble policing that because of internal disagreements. कि हमें करना चाहिए, नहीं अपने भाई हैं. अब देखें ताल्लुकात भी तो होते हैं कि आप अगर इलेक्ट हुए हैं तो आपके किसी जानने वाले ने ये लॉ कॉलेज खुलवाया है और उसने आपको 10,000 वोट डलवाए थे, तो मैं उसको एंटेगनाइज करूंगा तो मेरी तो सीट जाती है. So that's that other issue of regulatory capture. One facet of it. कि अगर आपने रेगुलेट करना है तो आप इलेक्ट होके रेगुलेट करेंगे. ये अगर इलेक्ट होने के लिए थे, in my very layman, uneducated, sort of not being a part of bar politics opinion, I think that's a big problem. And I think a lot of economists, a lot of people who particularly deal with sort of regulation are concerned, I think they would agree that regulatory capture in this case is it is acute, and it's probably one of the big problems with the legal profession. And when we were talking about compensation, I mean, यही मसला है कि there are so few barriers to entry. देखें, जर्मनी में आपको वकील बनने के लिए 7 साल ख्वार होना पड़ता है, और you have to give 2 state exams, and if you don't pass both of them, then those 7 years come to nothing. Wow. You don't get licensed. It's very difficult to become a lawyer there. In the US, जो लॉ डिग्री है वो पोस्ट ग्रेजुएट होती है. वो लॉ डिग्री काफ़ी नहीं है, उसके बाद आपने बार का एग्ज़ाम देना होता है, और कुछ स्टेट्स में बार एग्ज़ाम का पास रेट इज़ maybe 25-26%. So like an overwhelming majority of students sitting for the bar exam fail. And you put up these barriers to make sure कि कल को आपको जो लीगल एडवाइस दे रहा है, he should be... हाँ, देखिए एग्जाम, देखिए it's not enough for you to have gone to law school. आपने फीस भरी है, of course, good, that's great, but you shouldn't be coming to law school with the expectation कि भाई मैंने फीस भरी है तो मुझे अब लाइसेंस मिलना चाहिए. भाई आपको लाइसेंस मिलना चाहिए. आपने कल को लोगों को you're making decisions, helping them make decisions that could make or break their businesses. Absolutely. That could make जिंदगी मौत का सवाल हो सकता है यार. अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है और आपने किसी का मर्डर ट्रायल उठा लिया, उसको सजाए मौत सुनाई जाए, पता चले कि जी एविडेंस डिफेक्टिव था, एक केस था, तो that's... I mean, you're playing with people's lives. Exactly. So if you're not regulating, so if you're not establishing good barriers to entry, तो फिर यही होता है कि आपके हर साल 30-40 हज़ार वकील who have no training, and you put in no legal infrastructure to then train them from that point of time onwards. So then what's going to happen कि आपकी market oversaturate होगी. You have so many lawyers who are all at the same skill level. So then they bargain against themselves. कि भाई एक सीनियर कम है, जूनियर बहुत ज़्यादा है, तो एक सीनियर कहता है भाई मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा, वो कहेगा नहीं आपको देने पड़ेंगे. वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें नहीं रखता, मैं अगले को रख लेता हूँ, वो तो कुछ नहीं मांग रहा. सो दे प्ले यू अगेंस्ट योरसेल्व्स, एंड compensation is a very big problem. Not that the legal profession doesn't generate money, not as much maybe as abroad, but you see a massive disparity between what people with 10 to 15 years of experience who are running either law firms or big solo practices are taking home, and what they're paying their employees. There's not a good spread of money over the hierarchy, and there's no consideration कि यार मैं एक बंदे को रख रहा हूँ, ठीक है काम तो वो दबा के कराते हैं, but there's no, and to be fair, I mean compared to a lot of people like Mustafa and I, when we started in our practices, we made a lot more money than most people in the legal profession in Punjab, for instance. लोगों को तो literally शुरू में कुछ नहीं मिलता,
and when I say kuch nahi, I mean बाकी zero. zero मिलता है. Zero, Wow. right? And that is also a massive problem, because if your employer is paying you zero, तो then you're picking up, जी मैं 500 रुपए की 1000 रुपए की बेल करा देता हूँ, फिर आप 500 की 1000 में कितनी मेहनत करेंगे, कितनी एफर्ट करेंगे? आपने वॉल्यूम की गेम खेलनी है, जीते हारे क्या फ़र्क पड़ता है, रिप्रेजेंटेशन अच्छी थी नहीं थी, what does it matter? And that then sort of drags down the standard of your legal profession as well, because the amount of effort, now if I know कि मैंने एक task में बस इतना पैसा कमाना है कि जी, you know, I have to do 20 of these, so the amount of time that I dedicated to it automatically dwindles. So there's also a massive problem of incentives, and it comes back to regulation, effective regulation. That's what you need. You need the bar councils to sit down and say, okay, look, we're not here to pander to and receive votes. We're here to police the legal profession, and you need people there who aren't worried about this day in day out. So that's at least my perspective on it. No, thank you. Yeah, so I agree with everything that Salman said. What I would add is कि एक तो हम देखते हैं जो वकलागर्दी होती है, जो हमने वेंटिलेटर की तारें खींच दी या पुलिस की वैन को आग लगा दी, वो तो completely, of course, it's the bar's responsibility, because you obviously, these people like lawyers, us as lawyers or us as people, don't need to be taught कि आपने वेंटिलेटर की तार नहीं खींचनी. That doesn't need to be in a book or in a legal ethics class कि आपको ये पता होना चाहिए. अगर आप इसको बहुत अगर एक बेस लेवल पे एक माइन्यूट स्केल से देखें तो देयर आर अ नंबर ऑफ अदर थिंग्स दैट वी आर नॉट टॉट टू बिगिन विद. जैसे अभी हम बात कर रहे थे अमेरिका की बात कर रहे थे, अगर हम कंपेयर ही करें, सो बिकॉज वी डिड LLMs अब्रॉड, तो हमने यूएस एथिक्स लॉ लीगल एथिक्स के भी कोर्सेज लिए, वो पढ़ा, मैंने बार एग्जाम भी दिया, सो आई हैव सम आइडिया अबाउट दैट एज वेल. आप छोटे छोटे प्रिंसिपल्स ले लें. जी पास भी किया. सो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप ले लें. बहुत एक बड़ी चीज़ होती है कि वकील और क्लाइंट अपने फंड्स को मिंगल नहीं कर सकते, कि आप अपने जो आपकी फ़ीस हैं या जो आपकी इनकम है वो आप क्या कहते हैं वो आपने सेपरेट रखनी है, और क्लाइंट ने अगर आपको इंटरेस्ट अगर कोई पैसे दिए हैं कुछ पे करने के लिए तो आपने सेपरेट रखने हैं. वो एक अकाउंट सेपरेटली अकाउंट में आपने रखने हैं कि अगर एडवांस पेमेंट की हुई है कुछ की हुई है. और उसका रीज़न क्या है? ऑब्वियस रीज़न है कि ऑब्वियसली पैसे को मिंगल होंगे, उस पर डिस्प्यूट भी अराइज हो सकता है, उसमें चोरी का भी एक खदशा है कि वकील को कह नहीं आप कितने थे आप उतने थे. वो एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, वो doesn't exist here, or even if it exists in the law, no one knows about it. Confidentiality आप एक चीज़ ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बाहर, कि अगर आप मेरे क्लाइंट हो और आपने मुझे बताया कि मुस्तफा आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई एम डीलिंग विद दिस, तो मैंने आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है. मैं डिसबार हो सकता हूँ अगर मैं जाके वो सलमान के साथ शेयर करता हूँ. इवन अगर सलमान मैं सेम फर्म में काम करते हैं तो मैं उसके साथ ब्रॉड डिटेल शायद शेयर कर सकता हूँ, स्पेसिफिक नहीं कर सकता. इधर आप बैठेंगे वकीलों की, वो सारी डिस्कस करेंगे कि जी वो एक आदमी था, उसने अपनी बीवी को मारा, तो फिर ये हो गया, फिर वो हो गया. खुली बातें हो रही होती हैं, क्योंकि ये हमें एथिक्स नहीं पढ़ाए जाते. हम लम से पढ़े हैं, कंसिडर्ड लाइक वन ऑफ द बेटर लॉ स्कूल्स इन पाकिस्तान. हमारी भी लीगल एथिक्स क्लास में हमें बताया जाता है कि बार प्रैक्टिशनर्स एक्ट है, उसको फॉलो करना है, रूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हमें नहीं सिखाया जाता. अमेरिका में मैंने चीज़ें सीखी हैं. अच्छा. बार हम बार एग्जाम की बात कर रहे थे कि पूरा एक मौजू होता है, एक एग्जाम होता है. व्हेन यू वांट टू बिकम अ यूएस बेस्ड लॉयर यू हैव टू टेक अ स्पेसिफिक एग्जाम इन एथिक्स. सिर्फ एथिक्स का एक अलग पेपर होता है आपका, MPRE कहते हैं उसको, वो आपने लेना होता है. एग्जाम की आप बात कर रहे थे, हम वकील बनाते कैसे हैं इस मुल्क में? इट्स गॉटन मच बेटर विद द लॉ गैट एंड देयर मेकिंग चेंजेस फ्रॉम व्हाट. अब हमें तो टाइम हो गया दिए हुए, सो वी डोंट नो कि वो पेपर है कैसा, बट हमारे वक्त तो बहुत चीटिंग. तो हमारे वक्त तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन उदेदारान आके हमें जवाब बताते थे बेटा इसका जवाब ये है. वही मैं कंपेयर करूं, मैंने अब न्यूयॉर्क में बार एग्जाम दिया उनका. उधर जो आप मुकीद बिलीव नहीं कर सकते कि बच्चों के उधर क्या हालात होते हैं. रंग छूटे होते हैं, तबाह हुए हुए होते हैं कि जी पेपर है हमारा, बाहर एग्जाम का पेपर है, लोग खाना नहीं खा रहे, सो नहीं रहे, मेंटल ब्रेकडाउन हो रहे हैं कि बस एक पेपर देना है. उन्होंने JD कर ली हुई है, 3 साल वो अमेरिका में लॉ स्कूल में पढ़े हैं, and they're not children, they're generally of an older age because undergraduate उन्होंने कर लिया हुआ है. बट वो एक टेंशन में बैठे हुए हैं. 3 महीने 12 घंटे आप लाइब्रेरी में टाइम गुजार रहे हो पढ़ने के लिए. पास रेट आपका 20% है, तो आपको मेहनत करनी पड़ रही है और आप नहीं चीटिंग कर सकते. इधर बार एग्जाम का मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ. सो हमारी एक कॉलीग हैं जो जिनने हमारे साथ ही बार एग्जाम दिया. बार एग्जाम उनका जो जब जिस दिन रिजल्ट्स आए, मेरे को नंबर लग गए, आ गए, मैं पास हो गया. मैंने उससे पूछा कि आपका क्या मार्क्स आए? उसने कहा मुझे कोई रिजल्ट ऑनलाइन नहीं आया, मैं चेक करती हूँ. उसने बार काउंसिल फोन किया कि जी मेरा पेपर दिया था, रिजल्ट नहीं है. उन्होंने कहा मैडम आपका रिजल्ट गुम गया है. उसने कहा क्या मतलब गुम गया है? उन्होंने कहा जी आप फिर से दे दें पेपर. उसने थोड़ा सा ऊंचा बोला कि क्या मजाक है, मैंने पेपर दिया. उन्होंने कहा मैडम आप पास हैं. पास करके नंबर लगा के आज वो हाई कोर्ट की वकील है. ठीक है, और शी इज क्वालिफाइड पर्सन, शी वुड हैव पास्ड एनीवे, बट दैट जस्ट शोज के
कैसे लोग, जैसे सलमान ने कहा चीटिंग खुली होती थी हमारे ज़माने में, अभी भी होती होगी. सो इट्स नॉट टेकिंग सीरियसली. ये बेस लेवल से आपको सीरियसली नहीं लिया जाता. उसी में फिर आप छोटी छोटी इन्फ्रैक्शंस भी करते हो. पैसे, क्लाइंट के पैसे भी खा लिए. थोड़ा सा क्लाइंट को कह दिया जी एक्सपेंस 10,000 रुपये हुआ है, जब 2,000 रुपये एक्सपेंस हुआ था, 8,000 अपनी जेब में डाल लिया. वही फिर बढ़ते 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 आपको पता है पाकिस्तान में वो भी चीज़ है कि टैका होना चाहिए. टैका होना चाहिए. आप वकील क्यों बनते हो? लॉट ऑफ पीपल वकील से टैका होता है आपका. इट्स अ वेरी इजी वे टू अचीव सोशल मोबिलिटी बिकॉज इट्स अ शॉर्ट डिग्री. एक इज्जतदार प्रोफेशन अभी भी इन अ सेंस कंसिडर किया जाता है. बहुत इज्जतदार, बिल्कुल. तो लोग कहते हैं हम वकील बन जाते हैं, और फिर दैट इंटेल्स अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स एज वेल, इंसेंटिव्स आते हैं. लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर. Here's something interesting. In fact, जब मैंने अपना बार का एग्ज़ाम दिया था लम्स के बाद, तो मेरे साथ वाली सीट या मुझे पिछली सीट मुझे भूल रहा है. It was a 40-year-old man who was a telecom, he had a telecom business for 20-30 years. Yeah. And then मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, वो कहते हैं हाँ मैं पहले वो टेलीकॉम का बिजनेस करता था, तो हाँ अब मैं वकील बन रहा हूँ. मैंने कहा प्रैक्टिस करनी है? नहीं वैसे यार लाइसेंस मिल जाएगा तो फ़ायदा हो जाता है. क्या कर तो रहा हूँ मैंने गाड़ी पे सोचा sticker लग जाएगा. हाँ. वहाँ पे वो क्वेश्चन तो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ के साथ. बस वही बात है कि आई मीन इट टेक्स ऑल काइंड्स टू सॉर्ट ऑफ मेक द वर्ल्ड, एंड आई डू होप दैट जेंटलमैन इज प्रैक्टिसिंग नाउ. शायद वो ये पॉडकास्ट देखे और के यू हैव एक्सपोज्ड मी. नहीं लेकिन Yeah, just a long story short, the structural problems obviously as Salman has highlighted. Again, हमारे जो 2 cents हैं, हम अभी प्रैक्टिस 5-6 years, हमारी 5-6 साल की प्रैक्टिस है. हम नहीं बता सकते. लोग कहते हैं कि 2007 से पहले वाज डिफरेंट. लॉयर्स मूवमेंट से पहले वकील इतना ऐसे नहीं करते थे, ऐसी हरकतें कम होती थी. वो हमारा वो एक्सपीरियंस नहीं है बिकॉज वी स्टार्टेड प्रैक्टिस आफ्टर दैट. तो yes, there are structural problems with the bar not regulating. बार आप वकील ही बार को इलेक्ट कर रहे हैं और वो फिर एक साइकिल चल रहा है, और वही थोड़े से लोग हैं उनने वकील भर्ती करने हैं ज़्यादा ताकि वोट्स मिल सकें. और फिर एक छोटे लेवल पर प्रॉब्लम्स है कि आपको ये एथिक्स सिखाए भी नहीं जा रहे, आपको पढ़ाया भी नहीं जा रहा कि छोटी छोटी चीज़ें जो लीगल प्रोफेशन में इंपॉर्टेंट है कि ये इस तरह करना है, इस तरह आपने कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, आपने कंटिजेंट फीस नहीं लेनी, आपने क्लाइंट को ये नहीं कहना कि दे दें केस दे दें, जीत गए तो मैं 30% ले लूँगा, या कोई नहीं मैं आपका प्लॉट छुड़वा दूंगा और 3 मुरब्बे उसमें से मेरे या 3 मरले मेरे उसमें से. ये सारी चीज़ें इलीगल और अनएथिकल हैं दुनिया में, ये आप नहीं कर सकते. इधर भी इलीगल हैं, हमारे लॉज में लिखा हुआ है, रेगुलेशन नहीं और सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता. That's true. But on that very troubling note, अगर थोड़ा सा ये भी आप बता दें, like ठीक है, we all recognize, realize, feel the problems we face in the legal system because that's all we hear about, right? But from your perspective as lawyers who are in the system, who think about this day in, day out, like what are some good things जो कि पाकिस्तान के legal system में हो रही हैं that you are proud of and you feel कि यार हाँ this is something to carry on your shoulders? कोई like something for us to cheer about the Pakistan judicial system? I would say there are quite a few things actually. मतलब it's all not like gloom, pessimism and gloom. I think the fact that as like time goes by, the independence of our judiciary is increasing. क्या कहते हैं, आप 90s की judiciaries देखें, आप early 2000s की देखें, तो फैसले किस तरह फैसले होते थे. Even at the Supreme Court level, if there was one Chief Justice, सारे 17 जज, अगर 5 जजेस की बेंच है, 9 जजेस की बेंच है, तो वो सारे एक ही फैसला करते थे. वी सी मोर डिसएग्रीमेंट कमिंग अप, अ लॉट ऑफ गुड वर्क इज बीइंग डन. फॉर एग्जांपल एट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके चीफ जस्टिस तो हैं, अभी आपने देखा होगा मुनाल का, फौज के खिलाफ क्या कहते हैं, बिकॉज अगर इलीगैलिटी कोई भी कर रहा है, वो फौज कर रही है या वो जो भी कर रहा है, तो एक्शन हैज टू बी टेकन. जो उनका नेवी गोल्फ कोर्स है उस पर, सो देयर जजेस हु डूइंग गुड वर्क. That's one aspect of it. The digitization of the courts to an extent, that's another good aspect of it. उसके छोटे छोटे examples हैं. Things like इस्लामाबाद के अंदर you can e-file, आप वैसे भी फाइल करते हैं, बट e-filing की उन्हें ऑप्शन दे दी है. कंपनीज की बात कर रहे थे, फैसले जो आपके ऑनलाइन आ जाते हैं. अब जैसे ऑन लास्ट वीक, दिस वीक एक्चुअली ऑन वेंसडे आई अपीयर्ड इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसका फैसला जो ऑर्डर था उसका उस डेट का, वो आज ऑनलाइन अपलोड हो चुका हुआ था. सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स हैपनिंग. लॉज पे भी जैसे वी टॉक्ड अबाउट इट बिट, जैसे CPC अमेंडमेंट्स, CRPC विच इज़ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको अमेंड किया जा रहा है, को मेहनत की जा रही है उसकी तरफ, और लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं. ऑब्वियसली प्रोग्रेस तो आहिस्ता आहिस्ता ही होगी. दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक हमने जो अपनी घंटे की डिस्कशन में नतीजा आई थिंक निकाला है कि there are multiple factors that need to go right for the system to work. And it's a huge ship. तो ये छोटी we will soon have our first female Supreme Court judge. Gender parity जो है law में बहुत बुरी है.
We could First have in the history of this country. हम पूरी एक इस पे पॉडकास्ट, हम तो वैसे आदमी है, so 3 men should not be talking about gender parity in that sense, but क्या कहते हैं, हम कितना ही बता देंगे. But आप अगर कोर्ट्स जाएं, like if you ever talk to like a female lawyer, you'll see like it's really difficult for them. I think ये तो बाकी एक पूरा टॉपिक है जो कि पूरा एक टॉपिक है, और उस पे ये छोटी चीज़ें हो रही हैं. लास्ट ईयर द लाहौर हाई कोर्ट एक 2 finger टेस्ट होता है, which is how you check if how the state would check अगर someone had been raped or not. वो उन्हें ख़त्म किया. Female Justice Aisha Malik, she's the author of that decision as well. उनको she's been recently elevated to the Supreme Court. उस पे भी जितना pushback आया, that's a separate story, but it happened. So that's a positive sign as well. That's the point. So we are moving in the right direction on some aspects. That's what I would say. Salman? No, I would absolutely not only mirror what Mustafa says, but I think I think when I have these conversations with people, they feel compelled to ask this question because a lot of it sounds pessimistic. But that's not to say that that's how I view the totality of the profession and the direction in which we're going. And the thing is, ultimately, I mean, it's always a struggle, right? And you focus on the things that aren't going well rather than ones that they are, because those are done and dusted. Rather than sit and bask in the glory of having done something well, you move on to the things that are not going well, or the things that are controversial, or the things that need attention. So I think absolutely, I mean, within the legal profession, there's a lot of good work being done. Whether it's at the government's end, so even our government, the Attorney General, for instance, he's done phenomenal work. He's a man of great integrity, and he set a good example for lawyers across the country, young lawyers in particular. And I think having people like that to look up to it makes a big difference. To think, okay, well, the highest offices are held by people with integrity, and the independence of the judiciary is also important for us as lawyers, because then we view it as an institution with legitimacy and being officers of the court. Because the other thing that we are, a lawyer is considered an officer of the court. हमारी पहली जिम्मेदारी अपने client को नहीं होती, अदालत को होती है. We have to honor our duty as officers of the court, even as private citizens. कि हम एक private client का case उनके सामने ला रहे हैं, we can't lie to the court. We're not permitted to advise a client to break the law or to counsel them in means that would permit them to break the law. So we baat aa jati hai. In our conversations you'll see more idealism on this end and maybe a little less so on that end. But that is to say, like, it's always a struggle, and the point is you're seeing we see our colleagues struggling. We're seeing women, our female colleagues stand up for their rights. We've recently had the first ever Women in Law Awards, which is a good way to sort of tell women in the legal profession, look, we are here and we're in it together, and we have to fight against the system to make it a place which is more conducive to women. I mean, we can again have an entire podcast on how hostile the legal profession is for a woman, the entry barriers there, how difficult it is for women to sort of progress in the profession, to get to partnership or to get to a stage where they're recognized legal practitioners. But you see more women doing it now than you did maybe 10 or 15 years ago, 20 years ago. And that's the point. Change comes about in trickles and increments, but that's what makes it lasting, that you struggled for it, that the cost that you paid for it, it sort of reifies and cements it in place कि भाई मैंने इतनी कुर्बानियां दे के से किया है, अब ये तस से मस नहीं होगा. अब now we wait for the day when the Supreme Court will be composed of not one but 17 women justices. That's the day that we look forward to, and those are the struggles that we sort of that we as, probably in your, not in your lifetime, but you'll continue to do it. Well, hopefully one day. I mean, one day it will happen. One day it will happen. That's the hope. Yeah, I mean, in fact, it will definitely happen. I think like it will take its time, as you said. It will trickle down, but you play your part. नहीं, हम मर्द हज़रात रुकावटें तो पैदा करेंगे लेकिन हो जाएगा. Just like one small tidbit, सलमान के दोनों पेरेंट्स जो हैं वो लॉयर्स हैं, और इसकी अम्मी जो है उनके ज़्यादा मार्क्स थे लॉ स्कूल में जब इसके अब्बू से. So क्या कहते हैं, women do make there's evidence. better lawyers, there is evidence. But this was just, I think, an amazing note to sort of land this conversation on. And इसके बाद मुझे लग रहा है like हमें 1-2 घंटे और लंबी discussion, because it's not just deep and vast but also very fascinating. And I think
it's important education for anyone to know about their legal system. Chalti kaise cheezein. So thank you so much for your time. Just before we go, I know humne also discuss karna because mashallah you guys have great academic profiles and you're doing pretty well in the profession. So aap job bhi karo, apna kaam bhi karo. So there's a lot of good things that you're doing. So anyone who is watching, I know you very generously offered कि आप you can provide any support guidance in terms of अगर उन्होंने बाहर admissions लेने हैं तो क्या उसका तरीका है, या अगर यहाँ पे succeed करना है, so anywhere they can reach you guys, and we can post the details in the description as well. What's the best way to reach, and so we'd be happy to like help out, like as Salman said, and like somewhere in our conversation, especially at the beginning levels, when you become right when you become a lawyer, it's quite difficult. तनख्वाह नहीं मिलती आपको पता नहीं होता. आपने पाकिस्तान में वकालत भी जनरल प्रैक्टिस वकालत की जाती है, स्पेशलाइज नहीं होती. आप डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हो. एक दिन आप कोई तलाक का मामला देख रहे हो तो अगले दिन आप पावर सेक्टर की आर्बिट्रेशन देख रहे हो. सो लॉट ऑफ पीपल इट्स वेरी डिफिकल्ट कि यार मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्या करूँ, शुड आई डू एन LLM नाउ, शुड आई डू द बार, हाउ डू आई फिगर थिंग्स आउट, व्हाट फर्म डू आई वांट टू गो. ये क्वेश्चंस होते हैं, एंड बोथ ऑफ अस हैव बीन थ्रू दैट, एंड थैंकफुली अब नाउ दैट सम टाइम हैज पास्ड, हम वो लेवल से ऊपर आ चुके हैं, and we'd be happy to help and advise whoever, like young lawyers. You can reach out to us on LinkedIn, or we can share our email addresses as well. वो हम post कर देंगे, and we'd be happy to like assist and guide whenever we can and whoever we can. That's fantastic. Salman, Mustafa, thank you so much. Thank you for having us. Amazing. Thank you for having us. All right. Thank you. Thank you. Bye bye.